अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अछंती एवं गाड़ी आग को बढ़ुची आ किछि समय भितर राष्ट्रपति भवन में पहुंचे राष्ट्रपति को साक्षात करेंगे बजेट संक्रांत रे अनुमोदन मागिबे एवं चिराचरित आमे परंपरा देखीचे केतेबेले दही खुआई शुभेच्छा जनांती राष्ट्रपति तो शुभेच्छा बड़ा आशा रही है कि बजेट रे साधारण लोक कौन पाइबे मध्यवित्त कौन पाइबे ता सहित बड़ बड़ जो अर्थनीति को बूस्ट देउथबा हमर शिल्प उद्योग कारखाना तांको कौन मिलिबो कारण मोदी सरकार को ये होची तृतीय टर्म रो बजेट कारण 2014 रे जेतेबेले मोदी सरकार को प्रथम बजेट उपस्थापन कर जायथिला आकार थिला पाखापाखि 18 लाख कोटी एबे ताहा 3 गुणा रु अधिक बढ़ी गलानी अर्थात 50 लाख कोटी रु अधिक हलानी गला वर्ष ए सीमा सर्वाधिक थिला अर्थात बजेट जो आकार थिला ताहा सबु वर्ष को टपी थिला अर्थात धीरे धीरे देश प्रगति रे आगो को बढ़ुची एवं ये अर्थनीति बा देशर ये बजेट ही सूचना दउची कि हमर देशर अर्थनीति केते मात्रा बढ़ुची देश जोठी विश्व रे चतुर्थ अर्थनीति रो से सफलता पाई सारी तेणु मुंड पिछा आय केमिति बढ़िबो एवं मुंड पिछा आय बढ़िबा सहित देशर रोजगार केमिति बढ़िबो देश केते आगो को जीवो ताहा आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जेतेबेले पेड़ी खोलिबे जेतेबेले बजेट उपस्थापन करिवे सेतेबेले समस्तक सामना को आसीबो तेणु ए बजेट को नहीं जो आशा जो संभावना रही ता उपरे हम नजर रही बजेट रे कोन आसीबो एवं बजेट रे निर्मला सीतारमण साधारण गोटे कृषक ठार आरंभ कर महिला पर्यंत एवं विभिन्न वर्गर लोकों पर्यंत सबुठी केमती कौन व्यवस्था करुछंदी तेणु एथर बजेट को नहीं अनेक किछि संभावना रही किंतु बजेट पूर्व जो चित्र देखा मिली बजेट रे एथर कौन प्रावधान रोचे बजेट आकार केते रोचे को वर्ग को केते मिलुछि ता पूर्व आज बजेट उपस्थापन करने को जीवा पूर्व अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को आपण देखुथिले केमती कांजीवरम रो साड़ी पिंधिछंती एवं हाथ रे से नाली फाइल रही जदिओ आकु आ बही खाता बोली कहा जाउ नाही एबे टैबलेट रे बजेट उपस्थापन कर जाउछि तेनु आज रविवार रो ये बजेट उपस्थापन को नहीं बजेट को नहीं उत्साह रही संविधान ने वार्षिक बजेट रही बजेट पूर्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जेतेबेले साक्षात करथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सेतेबेले राष्ट्रपति तांकु दही चीनी खुआइबार परंपरा मध्य रही तेणु दही चीनी खुआई तांकु ये स्वागत करथिले बजेट को उपस्थापना करिबा पई बधाई मध्य जणाइथिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पाखरे ही प्रथमे ए बजेट को नहीं रखा जाए प्रेजेंट करा जाए जहां अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तांको सहित अर्थ राष्ट्रमंत्री पंकज चौधरी मध्य रहिथिले तेबे बजेट उपस्थापन करिबा पूर्व याकू संपूर्ण भाव में गोपन रखा जाए अनेक दिन धरी बजेट को प्रस्तुत करिथांती पूरा अर्थ मंत्रालय पूरा टीम निर्मला सीतारमण पूरा टीम एवं बजेट प्रस्तुत हेबा परे हालुआ बनैबार परंपरा थाए जेमिति आमर परंपरा रे सब बेले कहा जाए कि मिठारू किसी जिनस को आरंभ करा जाए तेणु बजेट समाप्त होगा परे हालुआ बनैबार परंपरा रही है जो हालुआ बनैबार चित्र मध्य आमे विभिन्न समय देखी तेणु एथर जेहेतु बजेट आसुची बजेट रे अभिभाषण केते हम दुईटी पर्यायर बजेट प्रथम एवं द्वितीय पर्यायर जो बजेट आसीबो ए बजेट अभिभाषण केते लंबा हबो एवं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ये अभिभाषण केते समय रहबो कारण 2020 रो जो तथ्य रहितला जो अभिभाषण संसद रहितला ताहा पाखापाखि 2 घंटा 42 मिनिट रहितला निर्मला सीतारमण ये बजेट स्पीच तेणु एबे से बजेट रे जेतेबेले आगत करिवे निर्मला सीतारमण ए बजेट रे केते समय पर्यंत अभिभाषण रखिबे एवं ए लंबा बजेट रे कौन कौन तथ्य निर्मला सीतारमण देशवासी रखा जाउछंती तापर मध्य नजर रही मु किछि तथ्य मध्य आपन सामना रखुछि कारण आज बजेट आसुछि एवं बजेट रे आज जेतु रविवार आसुछि रविवार रे बजेट उपस्थापन होउछि आज रविवार रे शेयर मार्केट मध्य देशर बजेट एवं बजेट उपस्थापन करिवे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण प्रथमे अर्थ मंत्रालय गले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थ मंत्रालय परे राष्ट्रपति भवन गले राष्ट्रपति बजेट को अनुमोदन कले राष्ट्रपति एवं द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर कैबिनेट बैठक बसी एवं कैबिनेट बैठक सरी सारी लोकसभा आगत हेब 2026-27 बजेट एवं शेष हो सारी कैबिनेट बैठक समय बड़ खबर कैबिनेट रे बजेट को लेकर आलोचना करा जायतिला एवं आलोचना सरी सारी आ किछि समय मध्य प्राय 12 ରୁ 15 मिनिट मध्य उदित नवम थर पई निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन करिबा पई जाउछंती एवं एई बजेट रे गोटे बड़ यूनिकनेस एया रहिछि जे पार्ट ए को फोकस कम
आउ पार्ट बी को संपूर्ण रूप से निर्मला सीतारमण पढ़ा जाउछंती जो थे वेलफेयर स्कीम्स रहिबो जो थे सरकार तरफ अनेक गुड़िए नुआ योजना दिज्व एवं से योजना रे केते एलोकेशन करा जाउची से सूचना मध्य आमे 12 मिनिट 15 मिनिट रे पाइबा पाई जाउछु उदित आमे मानस न्यूज 18 रो ये न्यूज डेस्क रे विभिन्न स्टूडियो के यूज करूछु विभिन्न प्लेटफॉर्म के यूज करूछु एवं पूरा अत्याधुनिक उपाय रे से तथ्य को दर्शकों का आगे आणुछु देश वर्तमान से दिगर मध्य आगो को बढ़ुछि आपण प्रधानमंत्री मोदी को देखि पारुछंती बड़ विजन रहिछि एआई क्षेत्र रे एवं माइक्रोचिप क्षेत्र रे सेमीकंडक्टर क्षेत्र रे केमती देश आगो को बढ़ुछि तार मध्य एक उदित से कथा प्रधानमंत्री कहितिले मध्य जे आमे एआई को नेकरी टेक्नोलॉजी को नेकरी सूचना तो दबु तेबे एथर बजेट्र विशेषत्व अनेक रही प्रथमे तो बजेट्र आकार सबुठु बड़ हो पारे कारण सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्रर ए होची बजेट जो बजेट उपरे 140 कोटी भारतीयों नजर रही बाद प्रथम थर पर रविवार बजेट उपस्थापन होगा जाउछि जहाँ इतिहास रे केबे मध्य होई नथिला से भली रेकर्ड संख्यक नवम थर पर बजेट उपस्थापन करने जाउछंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एपटे आम आदमी बा साधारण जनता अपेक्षा रे अछंती बजेट रु तांकू मिलिबो कोन बजेट रे दरदाम उपरे कोन एक्शन निया जाउची बा बजेट रे कोन घोषणा करा जाउची साधारण जनतांको पई टिकस रे कोन रिहाती मिलुची ए तमाम दिग उपरे जोरसोर रे देश रे चर्चा आलोचना चलीची एवं ए सब भितरे आउ मात्र कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले विश्वर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्रर बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रेकर्ड नवम थर पर बजेट उपस्थापन करने जाउछंती तेणु बजेट को नहीं अनेक चर्चा आशा अपेक्षा सबुकिछि बजेट उपरे रहुछि देशर भविष्य कौन हेबो देशर विकास गति कौन हेबो आगामी समय देशर जनसाधारणंकर आय केते हेबो व्यय केते हेबो किभली भाबरे देशर प्रगति हेबो ए तमाम धारणा बा ए तमाम संकेत बजेट रु मिलिबा पई जाउछि तेणु यह केवल एक बजेट नुहे देशर भविष्य बजेट उपरे निर्भर करे देशर विकास गति ए बजेट उपरे निर्भर करे तेणु सरकार परिकल्पना कौन अच्छी ए देश को नहीं सरकार योजना कौन अच्छी सरकार आगामी समय देश को क्यों सोपान को नवाई चाहूँगी ए बजेट रे सबुकिछि प्रतिफलन हेबो एवं प्रति विश्लेषक बा प्रति एक्सपर्ट ए बजेट उपरे मध्य नजर रखिछंती बजेट रो प्रतिटी दिग को नहीं विश्लेषण करिबा पई ए सब भितरे बजेट उपरे सारा देशवासींकर आशा अपेक्षा अनेक बजेट रु कौन नुआ आसूची बजेट रे आम आदमी को पई कौन घोषणा करा जाउची दरदाम ठारू मुद्रास्फीति को नियंत्रण को आनिबा पई सरकार कौन सबु पदक्षेप नेउचंती ए तमाम कथा बजेट रु जना पड़िबो तेणु यह एभली एक समय रे बजेट आसूची जे बजेट देशर विकास उपरे निर्भर करे बा देशर विकास मध्य ए बजेट को अपेक्षा करी रहिछि देशरे आगामी समय रे किभली देश सोपान परे सोपान चढ़िबो ए बजेट उपरे निर्भर करे साधारण बा आम आदमी ए बजेट को नहीं अनेक किछि आशा अपेक्षा रखिचंती तेणु से आशा अपेक्षा वास्तव में बजेट केते मात्रा रे पूरण करूची ता उपरे मध्य समस्तंकर नजर रहिबो आमे समस्ते जानिचे जेमिति चिराचरित स्वास्थ्य हेउ बा इंडस्ट्री हेउ अन्य विभिन्न क्षेत्र उपरे सरकार सर्वदा फोकस करी आसंती तेणु चिराचरित से सबु सेक्टर उपरे सरकार निश्चय फोकस करिवे एहा बाद नुआ कौन आसुची बजेट रे बा नूतनत्व कौन रहउची बजेट रे ताकू मध्य समस्तंकर अपेक्षा रही बजेट रु कौन आसीबो साधारण बा आम आदमी को बजेट रु कौन मिलिबो ताकू ने अनेक आकलन अनेक चर्चा तेणु आउ मात्र कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची एवं सारा देश सारा विश्व ए बजेट सुनिबो बा ए बजेट रे कौन सबु आसुची घोषणा को समस्तंक नजर को आसीबो तेणु एक अपेक्षा रही एवं ता सहित बजेट आउ कई घंटा परे उपस्थापन हेबा पई जाउची ता पूर्वरु तबे बर्तमान आमे आपनको सीधा सड़क चित्र देखाऊँ कर्तव्य भवन रु जोठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण उपस्थित अछंती तांको टीम उपस्थित अछंती एवं बजेट को शो करा जाउची बा देखा जाउची कारण आ किछि समय परे बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची एवं जेमिति आमे चिराचरित प्रक्रिया जानिचे कैबिनेट रे मंजूरी मिलिबो बा अनुमोदन मिलिबो तापरे राष्ट्रपति पाखकू जिबे तापरे संसद आसीबे जोठी बजेट उपस्थापन करिवे एवं ए होची ता पूर्वरु
आमे चित्र आपनकु देखाऊछु अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एवं तांको टीम संपूर्ण भाव प्रस्तुत कारण देशवासी अपेक्षा रही निर्मला सीतारमण बजेट पेड़ी केतेबेले खोलिबो एवं ए बजेट पेड़ी कौन सबू बाहरुची तेणु वर्तमान जो सबू प्रक्रिया अवलंबन हवा कथा बजेट पूर्व से सबू प्रक्रिया आम देखुचे गोटे पर गोटे आरंभ हो सारा अर्थमंत्री वर्तमान बजेट देखई सारी टीम उपस्थित रही किसी समय पर परवर्ती प्रक्रिया त्वरान्वित होपर संसद आसबे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जो बजेट उपस्थापन हेबो किंतु ता पूर्व आम देखुचे सारा देशवासी भितर एक अपूर्व उत्साह एवं उन्मादना भरी रही खास करिकी बजेट को नहीं ए सबु भितर अपडेट होउची वर्तमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी अर्थात आउ कई मिनिट भितर राष्ट्रपति भवन में पहुंचे राष्ट्रपति अनुमति मागिबे बा अनुमोदन मागिबे तापर सीधा सड़क बजेट उपस्थापन करने आसबे तेणु ए होची गणतांत्रिक राष्ट्रर एक महान प्रक्रिया बा परंपरा जहां प्रति थर बा प्रति बजेट आम देखे अनुपालन करा जाए एवं वर्तमान से प्रक्रिया आरंभ हो सारी किछि समय तले निज टीम सहित बजेट को प्रदर्शित करथिले बा बजेट केस को प्रदर्शित करथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एवं वर्तमान राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी अर्थात राष्ट्रपति अनुमोदन आणिबे बजेट उपस्थापन पाई तेणु आम देश में ए परंपरा बा ए प्रक्रिया को अवलंबन करा जाए वर्तमान से प्रक्रिया आरंभ हो सारी आम जहाँ आपको टीवी स्क्रीन रे बा चित्र रे देखौचे एपटे साधारण जनतांकर आशा अपेक्षा जहाँ रही ए बजेट ता उपरे केते दूर छिड़ा हेबो केते मात्रा रे छिड़ा हेबो ता उपरे रही समस्त नजर कारण आम देखुचे मुद्रास्फीति दरदाम वृद्धि यह जनसाधारण को बाधुची तेणु जनसाधारण अपेक्षार अच्छा एसबू दिगरे सरकार कौन पदक्षेप नेउचंती एवं बजेट रे तार प्रतिफलन हेउछि ना नाही तमाम क्षेत्र बा तमाम सेक्टर रे कौन सबू आशा अपेक्षा रही आम से संपर्क में विभिन्न समय आलोचना करिचु ता सहित आजिर चित्र बा आज मध्य से संक्रांत रे आमे आलोचना करिवु केउ क्षेत्र पई सरकारंकर केते फोकस अछि केउ क्षेत्र को सरकार केउ बाट पर्यंत नेबा पई चाहुचंती केउ क्षेत्र उपरे सरकार विशेष गुरुत्व देई पारंती एवं चिराचरित बजेट ठारू ए बजेट रे अलगा कौन हेबो बा नूतनत्व कौन हेबो ताकू नहीं अनेक चर्चा एवं आकलन जारी रही ए सबु भितरे बजेट नहीं वर्तमान प्रक्रिया आरंभ हो सारी आमे देखुथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज टीम को सहित संपूर्ण भाव में प्रस्तुत बजेट देखैचंती ता सहित राष्ट्रपति भवन अभिमुखे वर्तमान बाहरी सारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तेणु साधारण जनतांकर अपेक्षा कौन अच्छी आमे आपन को टीवी स्क्रीन रे देखौछु जेमिति रोजगार एवं चाकरी सृष्टि या उपरे मध्य सरकार यथेष्ट गुरुत्व बा फोकस दे पारंती गृह ऋण रे किछिटा रिहाती मिली पारे ए आकलन मध्य करा जाउची कारण बजेट जेतेबेले उपस्थापन हुए ता पूर्वरु आमे जानिचे सरकार विभिन्न अनुष्ठान विभिन्न क्षेत्ररू अनेक परामर्श नियंती मतामत नियंती एवं से मतामत को आधार करी प्राय मासेरु अधिक समय धरी विचार विमर्श करा जाए आलोचना करा जाए देश पई आवश्यकता कौन रही केउ क्षेत्र कौन आशा करुची विशेषज्ञ कौन परामर्श देइचंती ए तमाम समीक्षा करिबा परे सरकार बजेट रो एक रूपरेख प्रस्तुत करती तेणु ए बजेट रे जनसाधारणकर आशा अपेक्षा विशेषज्ञ परामर्श सबुकिछि प्रतिफलन हेबो ए आशा एवं विश्वास करा जाई पारे आउ कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची एवं ता पूर्वरु आमे देखुचे विभिन्न प्रक्रिया अर्थात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज टीम सहित प्रस्तुत वर्तमान राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी किछि समय राष्ट्रपति सहित आलोचना करिवे राष्ट्रपति अनुमोदन देवे तापरे राष्ट्रपति भवन रु बाहरी आसिबे बजेट उपस्थापन करबा पई आउ एपटे सारा देशवासी आज अपेक्षा रे अछंती बजेट उपस्थापन को अर्थात बजेट रे कौन सबू तांको पई घोषणा करा जाउची बजेट रे बड़ घोषणा कौन आसीबो कि ता उपरे मध्य समस्तंकर नजर ता सहित आजिर विशेषत्व मध्य आमे देखुचे बा संजोग मध्य देखुचे बहुत किछि कारण प्रथम थर पई कोनोसी रविवार दिन बा छुट्टी दिन बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची जहाँ एक विरल घटना या बाद बजेट रो आकार बा रूपरेख मध्य कुहा जाई पारे कि विगत वर्ष मानकरे बजेट रो आकार जहाँ थिला से तमाम रेकर्ड को चलित थरर बजेट भांगिबा पई जाउची अर्थात सबुठू बड़ बजेट चलित थर हेबा पई जाउची अन्यपटे निर्मला सीतारमण नवम थर पर बजेट उपस्थापन करने जाउचंती निज टीम सहित किछि समय तले उपस्थित थिले निर्मला सीतारमण एवं वर्तमान राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी जार चित्र आमे आपण माननकु देखौछु कारकेड रही
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अछंती एवं गाड़ी आगकू बढ़ुची आ किछि समय भितर राष्ट्रपति भवन में पहुंचे राष्ट्रपति को साक्षात करेंगे बजेट संक्रांत अनुमोदन मागिबे एवं चिराचरित आम परंपरा देखीचे केतेबेले दही खुआई शुभेच्छा जनाती राष्ट्रपति तो शुभेच्छा जणाइबापई मध्य किछि प्रक्रिया रही थाए तेणु सेभली किछि अनुमान करा जाई पारे जेतेबेले अर्थमंत्री राष्ट्रपति भवन में पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को साक्षात करेंगे एवं बजेट उपस्थापन नहीं अनुमोदन मागिबे से समय राष्ट्रपति शुभेच्छा जणाइबे एवं देशवासी आशा अपेक्षा को ए बजेट पूरण करिबो ए आशा मध्य राष्ट्रपति रखिबे एवं ता सहित शुभ विदाय देबे एवं ता परे परे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन करिबा पई आसीबे किंतु ता पूर्वरु आमे आपनकु लाइव चित्र बा सीधा सड़क चित्र देखाउछु। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज टीम सहित राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी आ कई मिनिट पर राष्ट्रपति भवन में पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को साक्षात करेंगे। तेणु आज भारत वर्ष पर एक बड़ दिन बा सबुठु गुरुत्वपूर्ण दिन कहले भूल हेब नाही। किभली भाव में देशर आगामी भविष्य बा आगामी समय चलिबो किभली भाव में देशर आगामी योजना रही ए बजेट रे सबुकिछि प्रतिफलन हेबापई जाउछि। तेणु देशर आय देशर व्यय ता सहित जनता किभली सुख स्वाच्छंद्य रही पारिबे से दिगरे सरकारंकर योजना कौन सबु रही से सबु दिगरे सरकारंकर परिकल्पना कौन रही सरकार देश को केउ दिगकू बा केउ मोड़ को नेबा पई चाहुचंती ए तमाम कथा आमे बजेट रु बुझी पारिबा बजेट रु जानी पारिबा। तेणु ए बजेट रो गुरुत्व बहुत किछि। तेबे बजेट को नहीं जनसाधारण आशा सर्वदा रही थाए एवं चलित थर मध्य चिराचरित जनसाधारण अनेक आशा करिसंती किंतु वर्तमान समय जदि आमे देखिबा ताहेले दरदाम गोटे प्रकार साधारण जनता को कलबल करुच्ची। वर्तमान वर्धित सुना दाम यहाकू नहीं मध्य अनेक लोक चिंता प्रकट करुचंती। मुद्रास्फीति यहाकू नहीं मध्य सारा देश में अनेक चर्चा होउची। जनसाधारण रोजगार एवं खर्च लोकंकर खर्च करिवार शक्ति ए तमाम दिग को नहीं चर्चा होउची। तेणु सरकार एसबू दिग उपरे तो निश्चय फोकस करिवे। एहा बात चिराचरित दिग अर्थात जेमिति आमे जानिचे स्वास्थ्य क्षेत्र हो परिवहन क्षेत्र हो एसबू दिग उपरे मध्य सरकार यथेष्ट गुरुत्व दे पारंती एवं एसबू दिग को नहीं मध्य सरकार यथेष्ट जत्नवान अछंती। एवं गत थर आमे देखिथिले आयकर परिसीमा को सरकार वृद्धि करथिले 12 लाख पर्यंत आयकर छाड़ करा जाइथिला नुआ टिकस स्लैब रे सेहि भली 75,000 टंकार स्टैंडर्ड डिडक्शन व्यवस्था मध्य करा जाइथिला। तेणु वर्तमान अनुमान करा जाउची बा विशेषज्ञ आकलन करुचंती कि आयकर सीमा को सरकार आहुरी वृद्धि करि पारंती। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्षेत्र में 75,000 नुहे यह 1 लाख पर्यंत वृद्धि हो पारे। जेमिति जने साधारण नागरिक बा जे 10 रु 15 लाख पर्यंत वार्षिक रोजगार करुचंती सेमाने केमिति शून्य टिकट बा जीरो टिकस फाइल करिवे ता उपरे सरकार गुरुत्व देउछंती जहाँ जनसाधारण सुहाइब एवं जनसाधारण या द्वारा उपकृत हो पारिबे। तेणु ए क्षेत्र उपरे बा जनसाधारण सरकार एभली किछि बड़ पदक्षेप नहीं पारंती। एहा बाद पेट्रोल डीजेल आमे जानिचे पेट्रोल एवं डीजेल वर्तमान सुधा भी जीएसटी परिसरभुक्त होई नाही। तेणु से दिगरे सरकारंकर निष्पत्ति कौन रहिबो कारण पेट्रोल डीजेल दाम जदि कमे साधारण जनता निश्चय आश्वस्ति पाइबे साधारण जनता या द्वारा उपकृत हो पारिबे। तेणु सरकार ए दिगरे कौन पदक्षेप नेउचंती ए दिगरे कौन योजना रही सरकारंकर एहा मध्य बजेट रे प्रतिफलन होई पारे। यह बात निजुक्ति क्षेत्र उपरे मध्य सरकार विशेष गुरुत्व दे पारंती। आमे देखुचे राज्य हुंतु बा केंद्र सरकार सर्वदा निजुक्ति एवं रोजगार उपरे फोकस करि आसिचंती। तेणु बजेट रे जणा पड़िबो निजुक्ति क्षेत्र पई बा लोकंकु रोजगार जोगाइबा पई सरकार कोन सब योजना करिचंती बा प्लान करिचंती। तेणु ए बजेट को नहीं जेते चर्चा कले मध्य कम हेबो एवं ए बजेट रु आशा अपेक्षा समस्तंकर यथेष्ट रही। केवल समय कहबो ए बजेट से आशा अपेक्षा उपरे छिड़ा हेउछि ना नाही। ता पूर्व आमे देखुचे वर्तमान बजेट उपस्थापन पूर्व प्रतिटी प्रक्रिया वर्तमान त्वरान्वित हेउछि। किछि समय तले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जेतेबेले बजेट सहित उपस्थित थिले बा बजेट देखौथिले तांको सहित पूरा टीम उपस्थित रहिथिले से समयର ए होउछि चित्र एवं ता परे परे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज टीम सहित राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी एवं राष्ट्रपति को साक्षात करने पर बजेट उपस्थापन करने आसवे। तेणु आउ मात्र कई घंटार अपेक्षा बजेट उपस्थापन होगापाई जाउछि। जो बजेट को नहीं किछि दिन हेलानी जोरसोर रे चर्चा बजेट को नहीं विभिन्न प्रकार आकलन। तेणु ए बजेट ता उपरे केते मात्रा रे छिड़ा हेउछि ता उपरे रहिबो समस्तंक नजर। मो सहयोगी उदित मध्य रहउचंती बजेट को नहीं जनसाधारणंकर आशा अपेक्षा कौन अच्छी सरकार केउ सबु क्षेत्र उपरे यथेष्ट गुरुत्व बा फोकस दे पारंती से संपर्क में आलोचना करबा। उदित पूरा सूचना दियंतु आशा अपेक्षा अनेक रही सरकारंकर फोकस कौन सबु होई पारे।
धन्यवाद विवरंजन। नमस्कार मु उदित आपन को स्वागत करुछि आज स्वतंत्र उपस्थापना को। आज पूरा देशर नजर रही 140 कोटी भारतीय भाग्य भविष्य आगामी वर्ष पाई कौन होगा जाऊँगी आज समस्त नजर रही लोकसभा भवन उपरे आज समस्त नजर रही संसद भवन उपरे एवं संसद रे आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रेकर्ड थर पाई लगातार नवम थर पाई आज बजेट उपस्थापन करने को जाउछन्ते एवं ये गुरुत्वपूर्ण आर्थिक दस्तावेज उपस्थापन हेबो। दर्शक बंधु ये गुरुत्वपूर्ण आर्थिक दस्तावेज जे केवल संख्यार एक गणित बा संख्यार एक दस्तावेज नुहे यह निर्धारण करिवो आगामी वर्ष पाई बा चलित वर्ष पाई आपन को पॉकेट को यह केते मात्रा रे सुहाइबो आपनकर दैनंदिन जीवन को यह केते मात्रा रे सरल करिवो ता सहित कृषकंकर आय केते मात्रा रे वृद्धि करिवो मध्यम वर्गंकर आय केते वृद्धि करिवो मध्यम वर्ग को आहुरी केते सक्षम करिवो आगु को जीवा पाई ये सब निर्धारण करिवो आजिरो ए बजेट। तेबे बजेट रे दुईटी भाग रही थाए जो बजेट कथा में आज कहउछंती गोटे प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग रे जो स्वल्प एवं दीर्घ मियादी योजना गुड़िक रही से दिगरे सरकार कौन चिंता करुछंती ता उपरे मध्य नजर रहिबो कारण सरकार ये उद्देश्य 2047 रो से विकसित भारत पाई एवं 2047 विकसित भारत पाई ये होची रोड मैप ये होची रिफॉर्म एक्सप्रेस जहां प्रधानमंत्री मोदी मध्य कहबाकू चेष्टा करिसेंती 2026 रो बजेट को नहीं बड़ अपडेट वर्तमान समय आसुचे थर निर्मला बजेट रे दुईटी भाग रही पारे। प्रथम भाग संक्षिप्त और द्वितीय भाग हेबो विस्तृत भाव में द्वितीय भाग को उपस्थापन करिवे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। द्वितीय भाग रे दीर्घकालीन लक्ष्य उपर गुरुत्व दिया जाउछि भारतर स्वदेशी शक्ति संपर्कित रोड मैप द्वितीय भाग रे आसीबो भविष्यतर संभावना को उपस्थापन करि पारंती निर्मला सीतारमण। तेणु बजेट ये द्वितीय भाग उपरे एबे समस्त नजर रही कि द्वितीय भाग रे निर्मला सीतारमण कौन उपस्थापन करिवे जहां आगामी समय रे भविष्य को सुधार करिवो एवं विकसित भारतर स्वप्न को साकार करने दिगरे ए रोड मैप रे आगो को हमको बढ़ई नब कारण प्रधानमंत्री मोदी मध्य कहछंती कि रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म आउ परफॉर्म ए तीन मंत्र सहित देश वर्तमान आगो को बढ़ुछि। ए रिफॉर्म एक्सप्रेस रे भारतर गति आहुरी केमती गतिशील आगो को हबो ता पर मध्य नजर रही प्रधानमंत्री ए अभिभाषण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जेतेबेले चलित वर्षर बजेट अधिवेशन में प्रथम अभिभाषण रखिले कि देश वर्तमान विकास रोडमैप रे आगो को जाउछि ए विकास रोडमैप केमिति हबो देशवासी एथुर कौन फायदा पाइबे ए आर्थिक वर्ष रे तार एक संकेत आपण माने पाइबे किभली भाव में देश में ये बजेट आगामी देशवासी भविष्य को परिवर्तन करिवो गोटे वर्ष भितर कौन आपण खर्च करेंगे केमिति आपणकर जीवन में सुधार आसिबो कृषकंकर आय केते बढ़िबो परफॉर्म रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म रो तीन मंत्र सहित केमिति आगो को बढ़िबो देश ता ऊपर मध्य नजर रही। आज बजेट आसुछि बजेट यात्रा रे आमे आपणकर साथी हबु कारण जो रोड मैप प्रधानमंत्री मोदी मध्य देखैछन्ती 2047 विकसित भारत रो जो विजन जो दूरदृष्टि रखा जाइछि सेही दूरदृष्टि बा सेही विजन रे वर्तमान देश आगो को बढ़ुछि एवं सेही जय यात्रा रे बा सेही विजन रे आमे आज आपणक सहित ए बजेट यात्रा रे शामिल होछु। आपण माने न्यूज 18 ओडिया सहित जोड़ी रुहंतु आज रो ए पूरा बजेट यात्रा आम सहित आपण माने देखिबे केमिति बीट बीट बा गोटी गोटी करी तथ्य आमे आपणक पाखरे पहुंचेबु। ए ऐतिहासिक बजेट हेबाकू जाउछि नवम थर पई अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ये रेकर्ड थर पई बजेट उपस्थापन करिवे एवं ए बजेट रे निर्मला सीतारमण का हाथ रे एबे सेही दस्तावेज अछि दु दस्तावेज रे आपण आसंता वर्ष पई कौन कौन निर्धारण करिसेंती सरकार जो विकास कथा कहा जायछि जो प्रगति कथा कहा जायछि ताकू केते दूर सरकार प्रस्तुत करिसेंती एवं ए दस्तावेज रे बा ए बजेट रे सरकार कौन आनिबा को जाउछंती ताहा मध्य आमे आपनक पाखरे रखिबु कारण ए बजेट ही निर्धारण करिवो गोटे आय करथिबा गोटे मध्यम वर्गर लोक केते रिहाती पाइबो ए बजेट रु ता सहित ए बजेट निर्धारण करिवो कृषक आय केते हबो ता सहित ए बजेट निर्धारण करिवो कि रेलर गति एबे साधारण ट्रेन ठारू एक्सप्रेस एवं बुलेट ट्रेन पर्यंत जेते गति आगु जाइछि ताहा हमर विकास को आहुरी केते दूर पर्यंत नहीं पारिबो। तेणु ए पूरा बजेट उपरे आज हमर ए उपस्थापना रहिबो ए बजेट रे कौन सरकार निर्धारण करिसेंती बजेट रे केमिति सरकार चिंता करुछंती कि देशवासी विकास हम कारण गोटे साधारण लोकर आर्थिक मानदंड किभली सुधार आसिबो देश को चतुर्थ बृहत अर्थनीति रे परिणत करा जायछि आगो को बड़ टार्गेट रही बड़ मिशन रही आम देश अर्थनीतिर जो गति रे
बा जो भली बड़ अर्थनीतिर टार्गेट रे आगो को बढ़ुछि ताहा केमिति आगो को बढ़िबो सेही लक्ष्य रे वर्तमान देश आगौछि। तेणु प्रति देशवासी मुंड पिछा आय केमिति बढ़िबो एवं निजुक्ति क्षेत्र में आहू सरकार कौन कौन सुजोग सृष्टि करिवे ता पर मध्य नजर रही। तेणु आउ किछि तथ्य मु आपनका सामना को आणुछि कारण बजेट 11टा पर आरंभ होबो। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पाखक जाइछन्ती सेठी ए बजेट को प्रथमे से रखिबे राष्ट्रपति को सम्मुख रखिबे तापरे बजेट को लोकसभा रे उपस्थापन करिवे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। किंतु बजेट रे अनेक रोचक कथा एथर रहिछि। कौन से सब रोचक कथा 1999 पर प्रथम करी रविवार दिन बजेट उपस्थापन होछि और रविवार शेयर मार्केट भी खोला रहुछि। बहुत दिन पर प्रथम थर होछि रेकर्ड थर पाई नवम थर पाई बजेट उपस्थापन करिवे निर्मला सीतारमण। 2011 परंपरा जारी हो 1999 पर जेतु रविवार ये बजेट होछि समस्त भाबुछंती रविवार छुट्टी दिन घरे रहिबा कथा ऑफिस छुट्टी बा कथा किंतु सबु किछि छुट्टी भितरे देश आगामी गोटे वर्ष पाई कोन आर्थिक विकास रे जीवो किभली देशर आय व्यय हिसाब होबो किभली देश रे निजुक्ति एवं शिल्प वृद्धि पाइबे सबुर हिसाब किताब आज लोकसभा आसवा जाउछि एवं आज निर्मला सीतारमण अर्थमंत्री बजेट को उपस्थापन करिवे। तेणु आज बहुत किछि रोचक कथा रही ए बजेट रे ता सहित कौन कौन आशा रही मध्यवित्त को टैक्स रे रिहाती मिलबार गोटे बड़ आशा सब रही है। चलित वर्ष मध्य रही विकसित भारत 2047 जो रोडमैप से दिगरे केते आगो को देश जीव से नहीं मध्य नजर रही। सहित ईवी अक्षय शक्ति रिन्यूएबल एनर्जी उपर नजर रही से क्षेत्र में सरकार आउ कौन कौन सुविधा देशवासी आणुछंती न्यूक्लियर एवं ग्रीन एनर्जी को मध्य गुरुत्व सरकार देउछंती प्रति समय या प्रधानमंत्री मोदी आरंभ करी। तेबे एथर बजेट विशेषत्व अनेक रही। प्रथमे तो बजेट आकार सबुठु बड़ हो पारे कारण सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्रर ए होची बजेट जो बजेट उपरे 140 कोटी भारतीयंकर नजर रही। यह बाद प्रथम थर पई रविवार बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची जहां इतिहास रे केबे मध्य होई नथिला। सेही भली रेकर्ड संख्यक नवम थर पई बजेट उपस्थापन करबा पई जाउछंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। एपटे आम आदमी बा साधारण जनता अपेक्षा रे अछंती बजेट रु तांकू मिलिबो कोन बजेट रे दरदाम उपरे कौन एक्शन निया जाउची बा बजेट रे कौन घोषणा करा जाउची साधारण जनतांको पई टिकस रे कौन रिहाती मिलुची ए तमाम दिग उपरे जोरसोर रे देश रे चर्चा आलोचना चलीची एवं ए सब भितरे आउ मात्र कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले विश्वर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्रर बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रेकर्ड नवम थर पई बजेट उपस्थापन करबा पई जाउछंती। तेणु बजेट को नहीं अनेक चर्चा आशा अपेक्षा सबुकिछि बजेट उपरे रहुची। देशर भविष्य कौन हेबो देशर विकास गति कौन हेबो आगामी समय रे देशर जनसाधारणंकर आय केते हेबो व्यय केते हेबो किभली भाबरे देशर प्रगति हेबो ए तमाम धारणा बा ए तमाम संकेत बजेट रु मिलिबा पई जाउची। तेणु यह केवल एक बजेट नुहे देशर भविष्य मध्य बजेट उपरे निर्भर करे देशर विकास गति मध्य बजेट उपरे निर्भर करे। तेणु सरकार परिकल्पना कौन अच्छी ए देश को नहीं सरकार योजना कौन अच्छी सरकार आगामी समय देश को क्यों सोपान को नवाई चाहूँगी ए बजेट रे सबुकिछि प्रतिफलन हेबो एवं प्रति विश्लेषक बा प्रति एक्सपर्ट ए बजेट उपरे मध्य नजर रखिछंती बजेट रो प्रतिटी दिग को नहीं विश्लेषण करबा पई ए सब भितरे बजेट उपरे सारा देशवासी आशा अपेक्षा अनेक बजेट रु कौन नुआ आसुची बजेट रे आम आदमी कौन घोषणा करा जाउची दरदाम ठारू मुद्रास्फीति को नियंत्रण को आनिबा पई सरकार कौन सबु पदक्षेप नेउचंती ए तमाम कथा बजेट रु जना पड़िबो। तेणु यह एभली एक समय रे बजेट आसुची जो बजेट देशर विकास उपरे निर्भर करे बा देशर विकास मध्य ई बजेट को अपेक्षा करी रहिछि देशर आगामी समय रे किभली देश सोपान परे सोपान चढ़िबो ए बजेट उपरे निर्भर करे। साधारण बा आम आदमी ए बजेट को नहीं अनेक किछि आशा अपेक्षा रखिचंती। तेणु से आशा अपेक्षा वास्तव रे बजेट केते मात्रा रे पूरण करूची ता उपरे मध्य समस्तंकर नजर रहिबो। आमे समस्ते जानिचे जेमिति चिराचरित स्वास्थ्य हेउ बा इंडस्ट्री हेउ अन्य विभिन्न क्षेत्र उपरे सरकार सर्वदा फोकस करी आसंती। तेणु चिराचरित से सबू सेक्टर उपरे सरकार निश्चय फोकस करिवे। एहा बाद नुआ कौन आसुची बजेट रे बा नूतनत्व कौन रहउची बजेट रे ताकू मध्य समस्तंकर अपेक्षा रही। बजेट रु कौन आसीबो साधारण बा आम आदमी को बजेट रु कौन मिलिबो ताकू ने अनेक आकलन अनेक चर्चा। तेणु आउ मात्र कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची एवं सारा देश सारा विश्व ए बजेट सुनिबो बा ए बजेट रे कौन सबु आसुची घोषणा को समस्तंक नजर को आसीबो। तेणु एक अपेक्षा रही एवं ता सहित
बजेट आउ कई घंटा पर उपस्थापन हेबा पई जाउछि ता पूर्वरु 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025, with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for self-reliance in natural fibers such as silk, wool and jute, man-made fibers and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative
to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative, and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research, and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGT-MSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is Tier 2, Tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27,
I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, REITs have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated REITs. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. Starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C. Launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities, and even temple towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform cum result based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet,
historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the portfolio investment scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee
to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training, and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects,
gaming and comics sector, ABGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ABGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, Viability Gap Funding and capital support, one girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences, 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year,
India is hosting the first ever global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakhi Gadi, Adichanallur, Sarnath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent, which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers, which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through a credit-linked subsidy program, B, scaling up and modernization of livestock enterprises, C, enhanced creation of livestock, dairy, and poultry enhanced creation of livestock, dairy, and poultry-focused integrated value chains, and D, encourage creation of livestock farmer-producer organizations. High-value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees,
with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, ALIMCO, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya. I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur
creation of 5 tourism destinations in 5 Odia states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram, and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity, and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing
is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers, wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax
and 30% as additional income tax in lieu of penalty and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services. Relating to software development,
These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment, or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards, Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However,
to disincentivize. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap, and minerals, will be rationalized to 2%, and that on Tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set-off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also.
I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach,
Government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted, long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit, or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans, and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind.
1.5 hours. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. आइटम नंबर 4 माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वर्ष 2026 पर उपस्थापित होईछि साधारण बजेट। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण वर्तमान बजेट उपस्थापित कर सारी सहित बजेट उपस्थापन होगा सहित गृह को मुलतवी घोषणा करा जायछि एवं बजेटर सबुठु बड़ दिग कौन बा टॉप 10 पॉइंट आपनकर टीवी स्क्रीन रे बजेटर प्रतिटी दिग उपरे आमे नजर रखिथिलु। वर्तमान बजेटर 10टी बड़ कथा बा बड़ दिग कौन रही आम आपको देखा चमड़ा सामग्री सस्ता होगापी जाऊँगी बजेट रे ए संक्रांत रे घोषणा करा जायछि। डायबिटीज एवं कैंसर औषध मध्य सस्ता हेबो से भली कैंसर 17टी मेडिसिन सस्ता होगापी जाऊँगी। सस्ता हेबो गंभीर रोगर 7टी औषध ए संक्रांत रे निया जायछि बड़ पदक्षेप। सोलार एनर्जी मध्य सस्ता होगापी जाऊँगी बजेट रे यार प्रतिफलन होईछि। से भली बैटेरी सस्ता हेबो। अन्यपटे बजेट रे बैटेरी सस्ता होगा सहित चमड़ा सामग्री मध्य सस्ता हेबो। बजेट 10टी बड़ दिग बा बड़ कथा वर्तमान आपणकर टीवी स्क्रीन रे ओडिशा रे विरल मूर्तिका खनिज कॉरिडोर निर्माण करबा नै सरकार रखिछंती प्रस्ताव। कंस्ट्रक्शन एवं इंफ्रा उपरे मध्य विभिन्न प्रकार स्कीम करा जायछि। सेमीकंडक्टर 2.0 पई दिया जायछि प्रस्ताव। बायो फार्म पई 10,000 कोटी टंका निवेश हेबो। एसएमई प्रोत्साहन पई 10,000 कोटी टंका प्रस्ताव दिया जायछि। सेहि भली छोट उद्योगींक पई 2,000 कोटी टंका व्यवहार करा जायछि। इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड मध्य गठन करिवे सरकार। 7टी नुआ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पई योजना रही। 2027 वर्ष पई कैपेक्स 12.2 लाख टंका करा जायछि। सेहि भली सिटी इकन रीजन स्कीम पई मध्य व्यवहार करा जायछि। ए होछि बजेट 10टी बड़ कथा बा बजेट रे केउ सब घोषणा करा जायछि तार चित्र तार लेखाजोखा वर्तमान आपण सामने। कारण बजेट को नहीं अनेक चर्चा होता अनेक लोकंकर बहुत किसी अपेक्षा रही है। ए सब भितर बजेट 2026 उपस्थापित हो सारी। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रेकर्ड 9म थर पर बजेट उपस्थापन करिसेंती एवं बजेट प्रमुख दिग बा बजेट हेडलाइंस कौन वर्तमान आपण टीवी स्क्रीन रे नड़िया उत्पादन बढ़िबा पई प्रमोशनल स्कीम हाथ को नहीं सरकार। 15टी ऐतिह्य स्थली विकास करा जिवो अर्थात ऐतिह्य स्थली किभली भाव में विकास करा जिवो से दिगरे मध्य सरकार योजना करिसेंती। या बाद भेटनारी कॉलेज एवं हॉस्पिटल मध्य निर्माण करा जिवो। ए संक्रांत रे मध्य सरकारनकर बड़ प्लान रही। ओडिशा रे विरल मूर्तिका खनिज
उपरे मध्य कार्य करा जिवो ओडिसा रे कार्यक्षम हेबो जातीय आकाश मार्ग सेहि भली तालचेर एवं अनुगुल सहित हेबो संयोगीकरण कलिंगनगर सहित संयोग हेबो पारादीप एवं धामरा बंदर संयोगीकरण उपरे मध्य फोकस करा जायछि देशर सबु जिल्ला रे बालिका हॉस्टेल निर्माण करा जिवो अर्थात बालिकांको उपरे फोकस एवं बालिका केमिति हॉस्टेल रे रहिबे ता उपरे गुरुत्व दिया जायछि आयकर रिटर्न फॉर्म उपरे मध्य सरलीकरण करा जायछि एप्रिल 1 तारिख रु लागू हेबो नुआ इनकम टैक्स छोट करदातांको पई आसीछि नुआ स्कीम आईटीआर 1 एवं आईटीआर 2 आयकर दाखल रो शेष तारिख रहिबो 31 जून विदेश रे पाठ पढ़ा पई टीसीएस 5% रु 7% पर्यंत जोगाइबो आयकर देइथिबा लोके प्रथम कैटेगरी रे विदेश थिबा संपत्ति मध्य घोषणा करिबा बाध्यतामूलक द्वितीय कैटेगरी विदेश रे थिबा संपत्ति घोषणा करि नथिबे 6 मास भितरे विदेश रे थिबा संपत्ति सेमाने घोषणा करिबे एनआरआई संपत्ति बिक्री उपरे टीडीएस को ह्रास करा जायछि ए दिगरे मध्य बड़ पदक्षेप आयकर रिटर्न फॉर्म आहुरी सरल हेबा पई जाउछि सरकार ए संक्रांत रे योजना करिसंती एप्रिल 1 रु नुआ आयकर आईन लागू हेबा पई जाउछि छोट करदातांको पई आसीबो नुआ स्कीम अर्थात आईटीआर 1 एवं आईटीआर 2 आयकर दाखल करिबा पई ए व्यवस्था करिसंती सरकार बजेट प्रमुख दिग चमड़ा सामग्री आहुरी सस्ता हेबो ए संक्रांत रे सरकार करिसंती घोषणानामा डायबिटीज एवं कैंसर औषध मध्य आगामी समय रे सस्ता हेबा पई जाउछि कैंसर 17टी मेडिसिन सस्ता हेबो ए संक्रांत रे बजेट रे घोषणा करा जायछि 7टी औषध जा कैंसर पई आवश्यक ता उपरे सरकार फोकस करिसंती एहा बाद सोलार एनर्जी उपरे मध्य सरकारଙ୍କର गुरुत्व रहिछि बैटरी मध्य सस्ता हेबा पई जाउछि एहा बाद बायोगैस मिश्रित सीएनजी मध्य दाम कमिबो बा रेट खसिबो बैटरी तयारी सामग्री उपरे सीमा शुल्क छाड़ पई निष्पत्ति नैछंती सरकार सेहि भली बड़ खबर हेउछि मद हेबो महंगा अर्थात मद उपरे अतिरिक्त टिकस देबा पई पड़ी पारे बा मद उपरे अधिक खर्च करिबा पई पड़ी पारे तेणु आगामी समय रे मद बा अल्कोहोलिक युक्त सामग्री रेट बढ़िबा पई जाउछि एपटे आयकर फांकिले जेल बदल रे वर्तमान जरिमाना नै निष्पत्ति नैछंती सरकार आयकर रिटर्न फॉर्म आहुरी सरल हेबा पई जाउछि जेमिति जनसाधारण सहज भाबरे आयकर फाइल करि पारिबे से दिगरे सरकार गुरुत्व दैछंती छोट करदातांको पई आसीछि नुआ स्कीम आयकर स्लैब रे किंतु कोनोसी प्रकार परिवर्तन होई नाही अर्थात जे माने नुआ रे अछंती बा नुआ ढांचा रे आयकर भरुचंती पूर्व भली 12 लाख पर्यंत जीरो फाइल करिवे एवं 75,000 रो स्टैंडर्ड डिडक्शन पाई पारिबे अर्थात पूर्वरु आयकर रे जहा थिला वर्तमान ताहा ही रहइबो कोनोसी प्रकार परिवर्तन होई नाही किंतु जो माने टिकस फांकुथिले सेमानंकु जेल जिबा पई पडुथिला एरिके सेमानंको उपरे जरिमाना लगाइबे सरकार तेबे बड़ खबर आयकर को नहीं जो सब आकलन चलीथिला चर्चा चलीथिला से सब रे वर्तमान पूर्णछेद पड़िछि कारण आयकर स्लैब रे कोनोसी प्रकार परिवर्तन होई नाही किंतु आयकर रिटर्न फॉर्म को आहुरी सरल करिबा पई जाउछंती सरकार एप्रिल 1 रु लागू हेबो नुआ आयकर नियम एवं एथिरे छोट करदातांको पई नुआ स्कीम आनिछंती केंद्र सरकार आयकर स्लैब रे कोनोसी परिवर्तन होई नाही अर्थात पूर्व भली 12,75,000 पर्यंत जदि आपनकर रोजगार अछि ताहेले जीरो टिकस आपण फाइल करिवे वर्तमान बजेट सरिबा परे यूसीसीआई बा उत्कल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स पक्षर एक सामाजिक सम्मेलन रो आयोजन करा जायछि सेमाने बजेट को नै कोन कहउचंती बा बजेट संक्रांत रे कोन प्रतिक्रिया आसुची आसंतु सुनि नबा आपनकर बहुत बहुत जरूरी है ता पई अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आमे डेवलप करिया पई कारण रोड रे ऊपर कंजेशन अधिका हे जाउची तेणु आमर रेलवे हो आपणकर इनलैंड वाटरवेज हो ये दुटा ओडिशा को आलोकेशन अधिका आसो एवं से डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर मेंशन करें आम जदि देखा आमर उत्कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जोटा फोकस एरिया एमएसएमई सेक्टर पर स्पेसिफिक से कहते विभिन्न इनसेंटिव मेजर्स विभिन्न जोटा कहते एसएमई ग्रोथ फंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ग्रोथ फंड प्राय 10,000 कोटी टंकार से गोटे फंड क्रिएट कर एसएमई को सपोर्ट करने ताको इनसेंटिवाइज कर टेक्नोलॉजी एडॉप्शन कथा कहूँ केमती एसएमई इजियर एंड चीप क्रेडिट केमती से माने पाई परिबे तांका हाथ को लिक्विडिटी आसीपर तांका प्रोडक्ट को केमती से माने मार्केट करें तापाई जेम जो आमर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस रही संगे लिंक करने को प्रचेषा करा एवं ग्लोबली कॉम्पिटिटिव भाव जमी आगर कही
सबुआड़ सपोर्ट फंडिंग रे इजियर हम टेक्नोलोजी एडाप्शन मॉडर्नाइजेशन होगापी टू स्केल अप देयर प्रोडक्शन से माने केमती इजियर फंडिंग पाइपर इनसेंटिव पाइपर व्यवस्था है कर्पस फंड गोटे 10,000 कोटी टंकार भी तैयारी प्रोडक्ट को मार्केट करने आहरी सरलीकरण कराई जीएम सहित लिंक कर थोड़ा सहीटा गोटे मेजर से आप देखा गले इंफ्रास्ट्रक्चर एसएमई मैंने आमर MSME ये दुईटा सेक्टर ओडिशा बहुत इम्पोर्टेंट तापर विशेष ध्यान दि जाइए। बजेट घोषणा हवा परे परे स्टॉक मार्केट उपरे मध्य यार एक बड़ प्रभाव देखा मिली कारण स्टॉक मार्केट आम देखुले सकाल बंचन होता अर्थात आज बजार खोलिबा परे एवं जेतेबेले बजेट उपस्थापन होइछि स्टॉक मार्केट रे मध्य एक बड़ धरणर संशोधन होइछि एवं निफ्टी रे पाखापाखि 435 पॉइंट वर्तमान सुधा ह्रास पाइथिबा बेले 24,890 रे पहुंची भारतीय निफ्टी से भली सेंसेक्स 80,990 रे वर्तमान ट्रेडिंग करूछि एवं सेंसेक्स रे मध्य पाखापाखि 1.5% ह्रास आम देखुचे अर्थात 1225 पॉइंट पाखापाखि सेंसेक्स रे खसीछि। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रे 23 पॉइंट ह्रास पाई तेणु आज स्टॉक मार्केट उपरे जो मानकर नजर रही जो मैंने शेयर किना बिका करुले से अनेक मात्रा रे निराश होते और जो मैंने स्टॉक मार्केट रे निवेशकारी थे से आज अनेक परिमाण रे निजर टंका हराई कहले भूल हम ना बर्तमान सुधा पाखापाखि सेंसेक्स रे 1.21% ह्रास घटी बेले निफ्टी रे 1.31% वर्तमान ह्रास घटी 330 पॉइंट तलकू खसी निफ्टी कारण मार्केट आरंभ आज आम देखुले जिते बजेट गोटे पटे उपस्थापन होता एपटे मार्केट आरंभ होता से समय आम देखी मार्केट पॉजिटिव को आसीथिला मार्केट प्रायतः 100 पॉइंट रु अधिका बढ़ी किंतु अकस्मात पुणी थे शेयर मार्केट खसबार लगी बर्तमान ताजा अपडेट निफ्टी 24,970 रे ट्रेडिंग करुवा बेले बर्तमान 1.37% ह्रास घटी अर्थात 340 पॉइंट रु अधिक खसी निफ्टी से सेंसेक्स 1,000 रु अधिक पॉइंट ह्रास घटी बर्तमान 81,200 उपरे ट्रेडिंग करुच्ची सेंसेक्स तेणु मार्केट गोटे प्रकार आज धराशायी कहले भूल हम ना बजेट गोटे पटे उपस्थापन होता बेले आशा करा भारतीय मार्केट हूँ ऊपर को उठी पारे किंतु प्रतिबदल में आम देखुचे मार्केट बर्तमान धीरे धीरे तलक खसुची जहाँ निवेशकारी एक चिंतार विषय निहती आज विभू रविवार बजेट उपस्थापन होता आज रविवार मार्केट खोला था शेयर मार्केट खोला था तेणु निवेशक माने बड़ आशा करते कि केंद्र सरकार बजेट जिते उपस्थापन हम से मार्केट से कौन रिटर्न देव किंतु एबे देखा मिलूँ कि मार्केट निरुत्साहित रही मार्केट खसी अर्थात सेंसेक्स और निफ्टी उभय वर्तमान ह्रास परिलक्षित होता जमापड़ी तेणु आज ये बजेट प्रभाव सीधा सीधा मार्केट उपर पड़ुवार देखा मिलूँ से निफ्टी हो सेंसेक्स हो उभय जगह एवं मार्केट ह्रास मार्केट ह्रास होइतवार देखा मिलूँ तो बजेट पर मार्केट क्रॉस करी आज बड़ नजर थिला निवेशक मानक ऊपर जेतेबेले बजेट रे इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं बड़ घोषणा कर जाउथिला जेतु कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़िबो एवं वित्तीय श्रृंखला बढ़िबो तापरे आहुरी ग्रोथ करिबो MSME सेक्टर हो किंबा विभिन्न उद्योग हो से माने आगो को अधिक मार्केट तांकर एक्सपांड करि परिबो अधिक से माने ग्रो करिवे एवं यार फलाफल शेयर मार्केट उपर कौन पड़ो तापर नजर रही किंतु शेयर मार्केट से उत्साहजनक आज रही निरुत्साहित फलाफल देखा मिली बजेट्र ये प्रभाव शेयर मार्केट रे पड़ी जो शेयर मार्केट एवं तलमुहा रही मार्केट क्रॉस होती बजेट आगत पर अन्यपटे आयकर उपरे रही था समस्त नजर एवं आयकर उपरे आशा रही आकलन करा स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ी पारे आयकर सीमा बढ़ी पारे किंतु ए सब उपरे केंद्र सरकार चुप रही अर्थात अर्थमंत्री स्पष्ट करिसेंति कि आयकर सीमा रे कोनोसी प्रकार परिवर्तन हेबो नाही किंतु आयकर पैठ करबा केमिति सरल होई पारिबो अर्थात रिटर्न फॉर्म केमिति सरल एवं सहज होई पारिबो ता उपरे सरकार गुरुत्व दैछंती कारण आमे देखिथिले गत वर्ष बजेट रे घोषणा करा जाइथिला आयकर सीमा 12 लाख पर्यंत अर्थात नुआ टैक्स रिजिम रे ता सहित 75,000 टंकार स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाइथिला अर्थात 12,75,000 टंका पर्यंत आपनकर जदि रोजगार अछि ताहेले आपण कोनोसी टिकस पैठ करिवे नाही एवं चलित थर मध्य ताहा ही बलवत्तर रहिबो कारण इनकम टैक्स स्लैब रे बा स्टैंडर्ड डिडक्शन रे कोनोसी प्रकार परिवर्तन होई नाही। या बाद
जुलाई 31 तारीख आयकर रिटर्न शेष दिन बा शेष समय रखा जाइछि एवं आयकर स्लैब रे कोनोसी प्रकार परिवर्तन होई नाही आ आयकर देउथिबा लोकंक पई दुईटी व्यवस्था करा जाइछि। अच्छा विभुरंजन एबे ये बजेट आगत परे को जिंस सस्ता आइछि को जिंस महंगा आइछि तार मध्ये चित्र में आनिबा डायबिटीज और कैंसर परी रोगर मेडिसिन गुड़िक सस्ता हे बोली कह जाइछि कैंसर 70टी मेडिसिन उपरे और सीमा शुल्क लागू हेब नाही तेणु महंगा होइछि मद और बैटरी सस्ता आइछि मद एबे रेट बढ़ी 2035 सुधा पाई न्यूक्लियर पावर कथा मध्य कह जाउथला बैटरी सस्ता हेब जोता मध्य सस्ता हेब डायबिटीज और कैंसर परी रोगर मेडिसिन सस्ता हो बोली आशा थिला एवं पुणी थे बजेट रे से भली प्रतिफलन देखा मिली 70टी कैंसर मेडिसिन उपरे सीमा शुल्क लागू होना जो तार रेट कम 2035 जो व्यवस्था रही से परिवर्तन होती बैटेरी तैयारी सामग्री गुड़िक सीमा शुल्क छाड़ कर तेणु बैटेरी रेट कम बायोगैस मिश्रित सीएनजी सस्ता है एयरक्राफ्ट निर्मित सामग्री उपरे सीमा शुल्क छाड़ कर सामरिक विमान निर्माण सामग्री उपरे आमदानी शुल्क छाड़ हेब सुना और रूपा महंगा हेब बोली कह 2 ରୁ 3 दिन धरी सुना रूपार दर कमी आसुला किंतु आज बजेट पर पुणी थे कहुच्छी कि सुना रूपार दर महंगा हो पारे विभुरंजन ये बड़ अपडेट आज बजेट उपर समस्त नजर रही क्यों क्यों जिनस गुड़िक सस्ता हे क्यों क्यों जिनस महंगा हे बिल्कुल उदित सब जनसाधारण अपेक्षा रही है बजेट पर कौन सस्ता है कौन महंगा है तेणु आम दर्शकों को पूरा चिठा चिठा देखाई चेष्टा करुचु सरकार घोषणा पर बजेट उपस्थापन पर यार प्रभाव विभिन्न द्रव्य बा विभिन्न सेवा उपरे कौन पड़ी पारे 2035 पर न्यूक्लियर पावर गुड्स टिकस छाड़ करा जाइछि बजेट उपस्थापन पर एक कथा स्पष्ट कि बैटेरी एवं जोता सस्ता हेबापई जाउछि सेहि भली डायबिटीज एवं कैंसर मेडिसिन मध्य सस्ता हेबो बजेट रे यार मध्य प्रतिफलन होइछि कैंसर रो 17टी मेडिसिन उपरे लागिबोनी सीमा शुल्क सेहि भली मद आहुरी महंगा हेबापई जाउछि एवं अन्यपटे बैटेरी आहुरी सस्ता हेबापई जाउछि अर्थात सरकार किभली भाव में पॉल्यूशन फ्री रहिबो समाज बा पॉल्यूशन फ्री केमिति हेबो ता उपरे फोकस करि आसुथिले एवं बजेट रे मध्य यार प्रतिफलन आमे देखुचे सेहि भली स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में डायबिटीज एवं कैंसर मेडिसिन मध्य आगामी समय सस्ता हेबापई जाउछि कारण कैंसर रो 17टी मेडिसिन उपरे सीमा शुल्क सरकार छाड़ करूछंती जहा फल रे मेडिसिन रो दाम कमिबो एवं जे माने मेडिसिन किणुचंती सेमानंक पॉकेट को मध्य कम बाधिबो सेहि भली बैटेरी एवं जोता मध्य आगामी समय सस्ता हेबापई जाउछि कारण ए दिगरे मध्य सरकार बड़ पदक्षेप नैछंती एवं सबुठु बड़ खबर हेउछि डायबिटीज एवं कैंसर रोगी जो माने अछंती जो मानकर संपर्क अछंती सेमानंक पई ए खबर निश्चय आश्वस्ति प्रदान करिवो कारण कैंसर तो प्राय 17टी मेडिसिन आहुरी सस्ता हेबापई जाउछि बजेट बड़ 10 कथा ओडिशा विरल मृत्तिका खनिज बाबद चिंता कर बजेट कंस्ट्रक्शन और इन्फ्रा स्कीम हेब सेमीकंडक्टर 2.2 प्रस्ताव दि जाइए बायो फार्म 10,000 कोटी निवेश रही ये बजेट बड़ 10 कथा एसएमई प्रोत्साहन 10,000 कोटी टंका दि जाउछि छोट उद्योगी 2,000 कोटी टंकार व्ययबराद होइछि इन्फ्रा रिस्क ग्यारंटी फंड गठन कर 7टी नुआ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर योजना कर 2027 वर्ष कैपेक्स 12.2 लाख कोटी सिटी इकोन रिजन स्कीम बड़ व्यवहार तेरे बजेट ये बड़ 10 कथा आम सामना को आणुचु क्यों क्यों क्षेत्र में एथर बड़ व्यवहार केंद्र सरकार तरफ क्यों क्यों क्षेत्र गुड़िक अधिक गुरुत्व दि जाइए जमीक विकास रोजगार टैक्स उपरे समस्त नजर थिला टैक्स रे सेमती किछि जदि बड़ परिवर्तन हेइनी किंतु सरलीकरण करबा को चेष्टा कर जाइछि ता सहित आउ केउ केउ उद्योग गुड़िक जेहेतु कैपिटल एक्सपेंडिचर अधिक बढ़ी अर्थात खर्च अधिक बढ़ाइबे भित्तिभूमि आरंभ कर विभिन्न प्रकार क्षेत्र में केंद्र सरकार तरफ खर्च बढ़िबो एवं यह अर्थनीति को आहरी गतिशील करिवो जो कथा बारंबार कह जाउथिला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर केते रहबो एथर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ी जहा फल विभिन्न प्रकार भित्तिभूमि आरंभ कर अनेक जिनस गुड़िक आग को अधिक होगाक जाउछि केंद्र सरकार तरफ एभली दिग गुड़िक अधिक ध्यान दि जाइछि ओडिशा पर मध्य अनेक किछि घोषणा कर अनेक किछि कुआ जाइछि ता सहित माइनिंग कॉरिडोर कथा कुआ जाइछि जहा ओडिशा पाई केंद्र सरकार चिंता करुछन्ति ओडिशा सहित दक्षिण भारतर किछि राज्य जो माइनिंग कॉरिडोर कथा
केंद्र सरकार चिंता करिसेंती तेणु ये 10 बड़ कथा बजेट रो आमे आपनका सामना करूछु। बिल्कुल बजेट प्रमुख अंश कौन रही प्रमुख घोषणा कौन रही आपंक टीवी स्क्रीन रे ओडिशा रे विरल मूर्तिका कार्य ओडिशा रे कार्यक्षम हेबो जातीय जलमार्ग 5 से तालचेर एवं अनुगुल सहित हेबो संयोगीकरण अर्थात जोगाजोग उपरे फोकस कलिंगनगर सहित संयोग हेबो पारादीप एवं धामरा रिजनाल सेंटर रे हेबो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से देशर सबु जिल्ला रे बालिका हॉस्टेल निर्माण नै मध्य लक्ष्य रखिछंती सरकार नड़िया उत्पादन बढ़िबा पई प्रमोशनल स्कीम अणाजिबो 15टी ऐतिह्यस्थलीर विकास करा 15टी ऐतिह्यस्थली उपरे किभली विकास करा ता उपरे मध्य होईछि योजना भेटनारी कॉलेज एवं हॉस्पिटल निर्माण करबा नै मध्य लक्ष्य रखिछंती केंद्र सरकार अर्थात खास करिकि स्वास्थ्य भित्तिभूमि एवं जोगाजोग उपरे रहिछि सर्वाधिक फोकस। एठी एक छोटा ब्रेक पाई आमे रहउछे एवं ब्रेक परे खूब शीघ्र फेरिबा बजेट रो प्रमुख अंश बा हेडलाइंस को नै आमे चर्चा आलोचना को आगो बढ़ाइबा। बजेट आकार कौन हो पारे विगत वर्ष मानक बजेट आकार कौन थिला एथर कौन परिवर्तन हो पारे केउ क्षेत्र उपरे सरकार केते फोकस रही से संपर्क में सूचना देवे लक्ष्मीनारायण। निश्चित भाव में विभुरंजन जदि आम पुराणा वर्षर बजेट को देखा ए वर्षर बजेट को कौन आशा कर आकलन करवा देखु आम 2024 और 25 वर्ष में जो कौ क्षेत्र में कौ सेक्टर में सरकार अधिक गुरुत्व देते तार नजर पकेबा प्रतिरक्षा को अधिक गुरुत्व देते प्रतिरक्षा देखो प्रतिरक्षा कारण देशर जो प्रतिरक्षा सेक्टर को स्ट्रंग करने सरकार बजेट अधिक व्यवहार कर प्रतिरक्षा क्षेत्र में कहवा पाखापाखि 6,21,941 कोटी टंका व्यवहार रही जदि 25-26 कथा कहवा अर्थ विगत वर्षर कथा आम कह 25-26 से प्रतिरक्षा क्षेत्र को गुरुत्व दी जाता अर्थ देखो 4,91,732 कोटी टंका गोटे बजेट उपस्थापन कर प्रतिरक्षा क्षेत्र में तापर ग्रामीण विकास कथा कहतु गृह मंत्रालय कथा कहतु कृषि कथा कहतु शिक्षा क्षेत्र में कथा कहतु स्वास्थ्य सहरांचल विकास एवं आईटी टेलीकॉम क्षेत्र में सेक्टर गुड़िकर अधिक गुरुत्व दी जाता तेणु प्रतिरक्षा क्षेत्र को अधिक गुरुत्व दी जापे ए बजेट में आम आकलन कर आशा करे पूरा क्षेत्र को आम देखा देखो 24 और 25 मसीह जो बजेट कथा आम कहवा परिवहन राजपथ क्षेत्र में 2,68,000 कोटी टंकार बजेट उपस्थापन करा अर्थ जो कम्युनिकेशन को अधिक गुरुत्व दी जाता रेलवाही क्षेत्र में यदि कथा कहवा 24-25 में 2,55,393 कोटी टंका बजेट उपस्थापन करा 25-26 कथा आम कहवा ग्रामीण विकास क्षेत्र में 2,66,817 कोटी टंका बजेट उपस्थापन करा तेणु ए क्षेत्र में कहुपे जेहेतु बर्तमान देश विश्व जो युद्ध को नहीं गोटे आशंका सृष्टि होची प्रतिरक्षा क्षेत्र को गुरुत्व दी जाऊँगी ऑपरेशन सिंधुर कथा विगत वर्ष आप देखो ताकू गुरुत्व देले हुए तो प्रतिरक्षा क्षेत्र को गुरुत्व दि जापे। बिल्कुल एवं दर्शकों सामने ए थिला चिठा विगत वर्ष मानक केउ क्षेत्र में सरकार केते टंका व्यवहार करथिले बा बजेट रे कौन सब रही प्रावधान तेणु चलित वर्ष ताकू आधार करी कौन सब परिवर्तन होउची बा कौन सब बढ़ुची ता ऊपर मध्य समस्तंकर नजर रही। निश्चित भाव में वर्तमान समय जदि आम कह जीएसटी को लेकिन जिते विभु प्रथम कथा आम न्यूज 18 ओडिया माध्यम रे बजेट को लेकिन जो स्वतंत्र उपस्थापना देखाऊँ से आमर लक्ष्य हो ग्रामांचल में रोकवा लोकटे बुझा दरकार जे बजेट कौन से जिते सरल भाषा हो पार आम से निकट में सब तथ्य पहुंचाई चाहते और जीएसटी कथा जिते आम आलोचना करुँच सबू को जदि आम कह भारतर ये हूँ गोटे एकत्रित कर जो कर सेवा एवं सर्विस कहतु कि सामग्री जो थे कि एकत्रित कर लागू होता है किणा बिकार लागू होता है आ जीएसटी लागू होगा द्वारा कौन होता है ना ए व्यवसाय आहरी सहज होता है दर स्पष्ट होता है एकाधिक टैक्स आपन को देवा पड़ न था जमीती कि पूर्व वैट थिला वैल्यू एडेड टैक्स थिला ता सहित सर्विस टैक्स थिला एवं ता सहित आपन को एक्साइज ड्यूटी देवा पड़ता तेणु driven by the all-new Seltos, Badass forever. Kia. बजेट रे ओडिशा को फोकस मिली बजेट रे केंद्र मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र अर्थमंत्री कौन कहते कार्यक्रम हम 20 जातीय जलमार्ग ओडिशा रे कार्यक्रम हम जातीय जलमार्ग 5 गोटे बड़ सूचना तालचेर आ अनुगुल सहित यहाँ संयोगकरण कर तालचेर अनुगुल सहित संयोगकरण हम कलिंगनगर सहित संयोग हो पारादीप आ धामरा
ए बाबद आज घोषणा बजेट रे फोकस दिया जाइछि केमती जल मार्ग विकसित हेबा द्वारा आहुरी अर्थनीति गति पाइब एवं जल मार्ग जरिया जेहेतु बेपार वाणिज्य बढ़ी तेणु बंदर भित्तिक शिल्प को आहुरी बढ़ावा पाई जल मार्ग कथा कहुई आज बजेट रे यार मध्य अनेक गुरुत्व रही यार मध्य अर्थ रही कलिंगनगर सहित पारादीप धामरा को संयोग करा केमिति जल मार्ग जरिया आहुरी शिल्प विकास कर बाबद अधिक आलोचना करवा मो सहित सुधांशु रंजन प्रधान अर्थनीति विशेषज्ञ जोड़ी होती। तो प्रधान आपन को स्वागत आलोचना को ओडिशा पाई आज कौन कौन घोषणा होती बाबद टिके प्रथमे आपन ठार जानिबा चाहिबो तापरे आज पूरा बजेट रो मुख्यांश गुड़िक जानिबा। देखंतु वर्तमान केंद्र मंत्री केंद्र अर्थमंत्री जो बजेट उपस्थापना करिसेंती सेथिरे ओडिशा समेत कर्नाटक गोवा आउ आंध्र प्रदेश यही भाया केतटा मिनराल सेक्टर जो स्टेट अच्छा ताकू नहीं गोटे रेयर आर्थ मिनराल हब बा कॉरिडोर करिवे बोली घोषणा करछंती। तालचेर अनुगुल आ धामरा संगे जो संयोगीकरण हम तार जो परिप्रेक्षी से भी बजेट उपस्थापना करछंती। तो बेसिकली देखिए गले ओडिशा को आमर इंफ्रास्ट्रक्चर जति केमिति डेवलप करिवो कारण आमर ओडिशा होची गोटे रिच मिनराल स्टेट जो मिनराल स्टेट रो जो रॉ मटेरियल गुड़ाक ताकू नहीं कमिंग जिनस जो डे गुड़ाक अन्य स्टेट को भी जाई परिबो ठीक भाव में एठी भी तार मैन्युफैक्चरिंग जिनसरा ठीक रही परिबो। तो सेही आखि आगे रखी सरल रे आपन ठारो बुझा पई चाहिबे जे सुदांत आपण सुनि परचंदी मते सुदांत सुनि परचंदी आज्ञा मु गोटे कथा सरल रे बुझिबी ओडिशा पई जहा करा जायछि ता द्वारा ओडिशार लोक को कौन फायदा हम टिके सरल रे बुझाई दिंतु जदि चाकरी मिलवार अच्छे केते चाकरी मिलियो जदि ये सब संयोगीकरण फल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िला किंबा कोनोसी प्रकार उन्नति हैला तले ओडिशार लोक माने को प्रकार सुविधा पाइबे टिके बुझाई दिंतु। देखो प्रथम आमर बजेट रदि आखि आगे रखिकी ओडिशार लोक मानकर बेनिफिट लोक मानकर जो सुविधा असुविधा ये सब जिन को आम देखा प्रथम है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जीवो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप द्वारा किसी जॉब क्रिएशन हम किसी विभिन्न जगार इन्वेस्टमेंट भी आसो ता द्वारा लोक मानक पाखे चाकरी सुजोग बाहर ता द्वारा ये मैन्युफैक्चरिंग जिनस किसी एक्सट्रा इन्वेस्टमेंट करहब ता द्वारा आम मानकर जो रॉ मटेरियल ये जो जिनस गुड़ाक अच्छी ताकू नहीं आम केमी आगामी दिन में प्रोड्यूस कर से सब जिन निश्चित रूप से गोटे सहायक हम। ओके सुधांशु बाबू आ गोटे कथा बुझापी चाहिए व्यक्तिगत भाव में जड़े अर्थनैतिक विशेषज्ञ हिसाब से आपण को बजेट टी कौ दिगरु भल लगिला और कौ दिगरु खराब लगिला। देखो एटा बजेट एबे सरीवार 5 मिनिट बा 10 मिनिट पूर्व ही केवल माने जेति कि सुनि चंदी बजेट रे मुख्यमंत्री जेतर उपस्थापन करंती सेते बेले संपूर्ण बजेट भी आसी न थाए संपूर्ण बजेट जेते बेले एटा आसीबो तापर ही या पर गोटे किछि दिग रखिले ही उचित मन करिवे। सुधांशु आपण जेति कि सुनि चंदी से भीतर आपण कोन लागला कि छाडी देले निर्मला मैडम ना सब कहि चंदी ना ना किसी तो निश्चित छाड़ी मत लगुच कारण से सब सेंटेंस गुड़ाक मुझे बहुत क्लोजली वाच करूली सब दिग गुड़ाक से कंप्लीट कर पारि ना भी संभव नुहे एत कम समय भितर भारत गोटे एडा बड़ अर्थनीति को 1.5 घंटा भितर कंप्लीट करवा विभिन्न प्रकार पार्ट को रखिकी यहाँ केवे भी संभव नुहे तेणु सी जी पारी द्वारा जी संभव कारण समय भितर जी जिन टच कर केवल से जिन ही कहती निर्मला मैडम टच कर से भितर आपन को सबुठारु पॉजिटिव पॉइंट कोटा लागला जहाँ को देखिए लगला जे एइथरे किछि गोटे यूनिकनेस अच्छी जो जिनस भारत को आगु नापी हेल्प करिवो पर्टिकुलाली ए बजेट रे कथबार्ता भाषण रू मत जी लगे गवर्नमेंट बर्तमान फोकस कर बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गुड़ा बेनिफिट गोटे करंट बजेट पर संगे संगे न थाए माने आज डेट रे जो बजेट उपस्थापन है तार बेनिफिटा केवल गोटे वर्ष 2 वर्ष या भीतर न थाए कैपिटल एक्सपेंडिचर बा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सपेंडिचर गुड़ा थाए सेटा कमिंग 3-4 इयर्स पर ही तार बेनिफिट गुड़ा आसे सेटा विभिन्न एम्प्लॉयमेंट एंगल रहू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उद्यम रहू विभिन्न प्रकार जॉब क्रिएशन रहू ये सब जिन फैक्टर गुड़ा आसला पर ही तार बेनिफिट जना तो यार इम्प्लीमेंटेशन जदिव समय लगे
किंतु बेनिफिट गोटे दीर्घ विजन रखिकी अर्थात जो अर्थनीति आड़ को आम अग्रसर होती जो विकसित भारत रोडमैप कथा कहुँ से दिगरे ये बजेट आगु को नब कि आपण कौन कहे मते मते तो भाषण रू लगुच गवर्नमेंट रे गोटे क्लियर विजन अच्छी जे कमिंग 2 to 3 इयर्स पर जे अर्थनीति की को डायरेक्शन में सेमन दवा को चाहउछंती जेमती आज डेट रे हमर विश्वर माने लगातार द्वितीय वर्ष होला सबटु द्रुत अर्थनीति भाबरे हम भारत को गणना होची तो सेही जो इकोनॉमिक का ग्रोथ अच्छी सेटा को मेंटेन करिया को पड़िबो ताको आउरी ताको केमि गतिशील करिया को पड़िबो सेही दिग को जाईकरी से विभिन्न प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट ऊपर ही गुरुत्वारोप करछ। अच्छा नियत भाबरे उदित आमे सुधांशु बाबू पाखु जिबा किंतु किछि सूचना मध्य दर्शकक पई आमे रखिया पई चाहिबा टैक्स को लेकर लोक मान मन में अनेक गुड़िया सूचना थिला उदित किंतु टैक्स रे सेमती किछि रिफॉर्म आनी नाहंती किंतु टैक्स रे जदि आपण दउ नाहंती ताले दंड नाही आपण सेते बेले मध्य सामान्य 30% जरिमाना देकरी आपण टैक्स निजर दे परिवे। द्वितीय कथा जदि टैक्स को लेकर कहा गला समय सीमा रिफॉर्म ए सब ऊपर ध्यान दिया जाय छे सुधांशु बाबू मुटे बुझिया पई चाहिबे टैक्स को लेकर किछि एक्सपेक्टेशन थिला ना जहा हबा कथा सेया हेछि टैक्स जो मिडिल क्लास लोक लोअर मिडिल क्लास लोक जो एक्सपेक्टेशन थिला गवर्नमेंट ताको पूर्व बजेट रे जति 12 लाख पर्यंत इनकम टैक्स छाड़ करला तापर तो आउ अन्य किछि दिगर रिफॉर्म पर्टिकुलरली ईज ऑफ डूइंग जैसे छोट छोट जो करदाता अछंती तांको केमिति सरलीकरण करियो तांकर प्रॉब्लम गुडा केमिति एड्रेस करियो से माने जेमिति गोटे टैक्स रिटर्न फाइल करे ताको ऊपर किछि बर्डन न पड़े जेमिति कहिले जे वर्तमान केवल सरलीकरण करा गला इनकम टैक्स फॉर्म गुडा आईटीआर 1 और आईटीआर 2 तो ता द्वारा कौन हम करदाता मैंने भी निजे बुझी पारे रिटर्न केमिति फाइल करहब जो प्रोब्लेम गुड़ाक आसूची केमिति आसेस करहब तो सेटा निश्चित जाइकरी करदाता मुंडरे गोटे विश्वास जन्मेब जे सरकार आम सरलीकरण कर आगु तो माने करदाता मैंने टिकस दउथिले किंतु ताकू बुझी पारु नथिले जे को वे बा केमिति उपाय रे ताकर केते टंका इनकम हेले से केते टंका टैक्स दउथुले वर्तमान सेही दिगरे पर्टिकुलरली सुधांशु टैक्स रो जो प्रथम पॉइंट टी अछि मु इंग्लिश रे पढ़ी दउची टिके दर्शकन को आपण सरल रे बुझे देबे मु आशा करिवे ए टैक्स सुधांशु सुनी परछने आपण सुधांशु बाबूंकर ऑडियो मु सुनी पारु नाही ओके सुधांशु बाबू आपण सुनी परछन्ते उदित बोधवे सुधांशु बाबू कटि जाइछन्ते किंतु जो टैक्स को लेकर आम कथा हो से टैक्स रे रिफॉर्म तो अणा जाइए किंतु किसी डिडक्शन को लेकर किसी टेक्निकल पॉइंट्स रही उदित व्यक्तिगत भाव में जदि मु पूरा बजेट को देखुची जी 90 मिनिट बोधवे भाषण देइछंती निर्मला सीतारमण एथिरे कैपिटल इंडेक्स जेतेबेले मु कहूची कैपिटल एक्सपेंडिचर जाको आमे बुझेबा पई चेष्टा करूछु कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्थात भावंतु स्वास्थ्य रे खर्च कले किंबा एजुकेशन रे खर्च कले एथरो बेसी किछि रिटर्न आसीबार नै कैपिटल एक्सपेंडिचर रे आपण देशर विकास करिवे जो समय रे आपण इंफ्रास्ट्रक्चर रे खर्च करिवे आपण विभिन्न प्रकार निवेश करिवे जो थरे 2047 रो जो विकास रो प्लानिंग करिसंती सरकार सेथरे ऐड ऑन हबो ए कैपिटल इंडेक्सर को प्राय 30 रु 45 मिनिट स्थान देइछंती निर्मला सीतारमण किछि अतिथि आसिले आमे तांको सहित ए विषय रे आलोचना करबा आ सस्ता महंगार जो कथा रहिछि ता आमे आपण कठारो सुनिया चाहिए जो सस्ता महंगा को लेकर लोक मान मन में प्रश्न रही कहतु अच्छा ये सस्ता महंगार हिसाब तो चलो कि ये बजेट पर कौन सस्ता है कौन महंगा है मद परी जिनस गुड़िक महंगा हम बोली कहुच्छे सस्ता जो जिनस पर फोकस होता कैंसर और डायबिटीज परी रोगर जो मेडिसिन गुड़िक रही से किसी मात्रा रे सस्ता हम बोली कहुच्छे आउर अनेक जिनस उपर इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ह्रास कर जहाँपर सेगुड़िक सस्ता हम बोली कहुपे आम सहित सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट अर्थनीति विशेषज्ञ त्रिनाथ लेंका जोड़े सुत लेंका आपको स्वागत करुच्ची न्यूज 18 ओडिया को सुत लेंका ये बजेट रु जदिओ बजेट सरीबार यही किछि समय होइछि ए बजेट को नहीं कि आपण को मुहरे हस अच्छी ना टिके निराश अच्छी आपण ए बजेट को केमिति देखुछंदी नमस्कार जदि देखिबा जे बजेट गोटे ग्रोथ ओरिएंटेड आउ बैलेंस बजेट हेछि ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ करिया पाए 2047 रो विकसित भारत रो टार्गेट को अचीव करिया पाए
जहाँ रिफॉर्म्स आने कथा बजेट आलोकेशन हवा कथा से ध्यान दि जाए गोटे नेगेटिव जदा कहवा जेहेतु स्टॉक मार्केट आज समस्त मत किसी भी क्वेश्चन आसूला स्टॉक मार्केट कौन पाई नेगेटिव जाइए स्टॉक मार्केट कौन पाई मार्केट को नेगेटिवली नौची एथिरे आपण देखंतु यार गोटे रीजन होची जे फ्यूचर एंड ऑप्शन रे सिक्यूरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ेबा कारण आपण देखंतु सिक्यूरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ेले आपणकर टर्नओवर कमिबो आपण सेंसेक्स पाखापाखि 1600-1700 पॉइंट आपणकर माइनस जाइतला मते आपण मीडिया पाई पर कि जण को आसला मुकली आई वाज आल्सो नॉट अनहैप्पी कारण मार्केट ताकू पॉजिटिवली नबो परे जेतेबेला आपण एटा बिकॉज जेतेबेला स्मॉल इन्वेस्टर्स बा स्मॉल इन्वेस्टर्स माने फ्यूचर एंड ऑप्शन रे ट्रेडिंग करिकी कोटी कोटी टंका लॉस करचंती किंतु सेठी पई ताकू आमे जदी कहिबा जे एफंड को से माने न जानतु आपणकर निवेश करिया पई हेले निवेश कले हमर भारत रो अर्थनीति रु बा इकोनॉमी रु आमे पैसा पाई परबा सेठी पई एटा को डिमोटिवेशन करा जायछि ए फंड रे ट्रेडिंग न करिया पाए कारण एटा मु किछि वर्ष लानी मु निजे भी कहि आसुछि जे ए फंड रे ट्रेडिंग कले आपनकर ट्रेडर मानकर स्मॉल ट्रेडर मानकर लॉस हुए ए फंड इज ओनली मेड फॉर हेजिंग जो माने हजार हजार कोटी अछि सेमान ट्रेडिंग करंतु सेमानकर पैसा अल्प किछि गले आसिले सेथिरे किछि फरक नै किंतु छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो माने ट्रेडिंग करूचंती सेथिरे सेमान लॉस करथिले सेथि पई आज मार्केट आज आपणकर 1600-1700 पॉइंट माइनस जाइतला किंतु वर्तमान ताकू बुझिला परे सेटा को इमीडिएट रिएक्शन हेतला आपण देखंतु वर्तमान मार्केट ताकू रिकवर करसने 680 पॉइंट्स वर्तमान अछि सेंसेक्स तेणु सेथि पई विचलित होबा कथा नुए बट ओवरऑल जदि देखिबा बजेट रे सबुठु भलो कथा कहबा देखंतु किछि बजेट रे पॉजिटिव नेगेटिव हेबो त्रिनाथ बाबू आपण टिके मार्केट ऊपर हमें फोकस करबा त्रिनाथ बाबू आपण कहउचंती जे मार्केट हठात गळी गला तापरे पुणी मार्केट स्टेबिलिटी आड़ को आग को जाऊँच आपको लगुच किसी समय भितर स्टेबल हम ना मार्केट सेमती माइनस रे जीव आ पछर एक्चुअल कारणटा कौन आउ ये माइनस जीवाटा आपण भावुचंती कि जे जो मान को काउंटर करबा पई करा जायछि ता ठीक भाव रे काम देला आज्ञा देखो मु किछि दिन पूर्व मु भी समस्त चिंता व्यक्त करूँ कारण मु भी स्टॉक मार्केट रे मो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स जदि कहबा मो 1996 मु पाठ पढ़ा बेलू कर एवं तार मार्केट जदि पाखापाखि 30 वर्ष हम 30 वर्ष भितर मोर जो एक्सपीरियंस रु मु कहूँ आज्ञा पिला माने आजिकली पिला माने चाकरी छाड़ी कहउचंदी मु ट्रेडिंग करिवि मु माने जो जॉब करिवे नाही ट्रेडिंग करिकी पैसा कमेबी जोटा होची आजिर होची सबुठु बड़ा कंसर्न कारण से माने जदि पाठ पढ़ी की जदि अदर वे तांकर एक्सपर्टाइज जदि यूज न करिवे मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर सेथिरे जदि न करिवे हां कोठी कंपनी रो प्रेशर आसीबो काम पई सेटा गोटे अलगा कथा किंतु ताकू छाड़ी की प्रेशर माने जेन जे कथा कहतु आपणकर आजिका दुनिया रे जदि आपणकर यंगस्टर्स कथा कहतु जो माने हमर युवा प्रतिभा अछंती से बहुत जगह रे मु देखुची से माने चाकरी छडुचंती सेटा होची गोटे बड़ा कंसर्न ताकू कर करिया पाए ताकू कर करिया पाए ए जो डिसीजन नियाइची मुआको निश्चय मुआको सपोर्ट करी त्रिनाथ मोर गोटे डाउट अछि एथरे बहुत बड़ा कथा त्रिनाथ जो माने मोर डाउट एठी अछि कारण जो देश रे 140 कोटी लोक अछंती जो देशर मार्केट रे मात्र 2-3% लोक अछंती नुआ जनरेशन जेते बेले गोटे रिस्क नवा पई आसुचंती नुआ जनरेशन भाबुचंती जे आमे मार्केट रे पैसा लगेबू सेते बेले जदी सरकार गोटे कर देई देबे जो डरटा पिला मानक भितर थिला से डरटा तो पसी जीवो मार्केट को तो बेसी लोक जिबेनी ता लाभ कोन हला त्रिनाथ बाबू ओके आपण का पॉइंट को मु आसुची देखंतु स्टॉक मार्केट समस्त का नजर अच्छी सबू चैनल रे बर्तन चलছে स्टॉक मार्केट खसिला मार्केट बजेट परे स्टॉक मार्केट रे आमे कोन जदी शेयर किनुचे आमे वी आर बिकमिंग पार्टनर टू दैट बिजनेस पार्टनर टू दैट कंपनी सेटा होची इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक मार्केट रे ट्रेडिंग करबा होची गोटे स्पेकुलेशन बा आपनकर गैम्बलिंग जदी आपण ट्रेडिंग कले स्पेकुलेशन कले फ्यूचर ऑप्शन बेसिकली आपण जो देखिबे जो माने ट्रेडिंग करूचंती फ्यूचर ऑप्शन थ्रू रे इन्वेस्टमेंट्स करा जायनी फ्यूचर ऑप्शन मींट फॉर हेजिंग आपणकर जदी मार्केट रे इन्वेस्टमेंट्स अछि ताको ऑप्शन जरी आपण हेज करि परिबे रिस्क को कम करि परिबे सेटा को यूज होबा दरकार किंतु
ताको आजिर यंगस्टर्स ताको मिसयूटिलाइज करूछंती ताको ट्रेडिंग गोटे प्रोफेशन हिसाब नौचंती सेटा होची रॉन्ग कारण आपनकर यंगस्टर्स आसंतु इन्वेस्टमेंट्स करंतु आपन को मु एठी गोटे कहिबी जो माने इन्वेस्टमेंट्स करूछंती भारतीय कंपनी माने आपनकर जदि आगु को नेक्स्ट 10 to 15 years इंडिया विल बी द मोस्ट ग्रोथ ओरिएंटेड कंट्री कारण आपण जदि 2047 कथा कहूचे $30 ट्रिलियन कथा इकोनॉमी कथा कहूचे 1947 रे थिला $227 बिलियन जोटा कि 200 आपनकर 1991 रे थिला $260 बिलियन वर्तमान $4.18 ट्रिलियन आमे फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी रे आमे पहुंचीचे जोटा कि 2027 आमे 5 ट्रिलियन पहुंचीबा बोली आशा करा जाउचे किंतु इन्वेस्टमेंट्स करी कि जीवा दरकार ठीक अछि त्रिनाथ बाबू आपण कहया पई चाहउछन जुआ को जानतुनी आपण कहया पई चाहउछन जुआ को जानतुनी किंतु निवेश करंतु मु बुझी गली सर आपण कथा आ गोटे कथा मु बुझिबा पई चाहिबे आपण ठारू जे जेतेबेले आमे बजेट टी को भलो भाबरे देखुछु सेही समय रे हमकु लागिला जे निर्मला मैडम MSME फिशरीज काजू कोकोनट ए सबुर कथा भी आज बहुत समय कहले प्राय 6-7 मिनिट मु देखुतिली MSME ऊपर बहुत गुरुत्व दिया गला आपण को लागुची कि MSME गुरुत्व 6-7 वर्ष भितर रिफ्लेक्ट करिवो आ 6-7 वर्ष भितर आमे देखिबु जे बहुत जगह रे मिडिल क्लास लोक माने विभिन्न प्रकार रो छोटो छोटो इंडस्ट्रीज करथिबे ना यार किछि प्रभाव पड़िबो नि त्रिनाथ बाबू देखंतु न सब आपण जे देखिबे MSME होची बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एटा केही माने एथिरे दिमत हेबे नाही MSME सेक्टर को सपोर्ट करिबा पई हेले हमको बड़ बड़ इंडस्ट्री सेटअप करिबा ताकू सपोर्ट करिवो MSME दरकार पड़ले MSME सेक्टर भी आपनकर जदि अब छोट छोट इंडस्ट्री से माने भी एक्सपोर्ट करिबा स्टार्ट करलानी प्रथम थिला MSME कोन जति गोटे बड़ इंडस्ट्री हैला ताकू सपोर्ट करे पई एंसिलरीज बा छोट छोट इंडस्ट्री पाखा पाखी सेटअप होतिला आज्ञा से भितरे MSME सेक्टर को प्राधान्य दिया जाउची एवं MSME रे आपनकर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हे पारिबो कारण जदि गोटे बड़ा कंपनी गोटे 20,000 कोटी 10,000 कोटी जदि इन्वेस्टमेंट्स करके आसुची जदि से 1000 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूची एटी MSME ताकू एंसिलरीज कंपनी माने MSME जरिया रे से माने अनदर 10,000 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करि परिबे तेनु MSME सेक्टर को प्राधान्य दबा निहाती दरकार आपण देखंतु एथिरे MSME सेक्टर जते कहूचे इलेक्ट्रॉनिक्स स्कीम रे आउटले इंक्रीज 400 बिलियन रुपीज कारण 400 बिलियन रुपीज को एठी आपनकर ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स कारण आपण देखंतु इलेक्ट्रॉनिक्स गोटे एरिया जोटा कि आमे एठू मैन्युफैक्चरिंग करके आमे बाहर कंट्री को आमे एक्सपोर्ट करि परिबा वर्तमान आमे आनिचे वर्तमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करिचे यूरोपियन यूनियन सहित तापर आहुरी भी केते कंट्री सहित आमे एग्रीमेंट भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बा ट्रेड डील करिबा तेणु जितेबाला करवा आमर भित्ति प्रस्तर बा आपणकर भित्ति प्रस्तर स्थापन करिया पई पड़िबो एवं हमर बेस को स्ट्रांग करिया पई पड़िबो सेति पई आपण देखंतु एपटे स्किल रु आरंभ करके एपे MSME सेक्टर को सपोर्ट दिया जाय रिगार्डिंग टिके सुधांशु बाबूकर मध्ये प्रतिक्रिया नेबी सुधांशु बाबू 10,000 कोटी टंका केबि देखो सुतलेंका बु फेरुछ आपण बाकू सुधांशु बाबू आज अर्थमंत्री कहचंती कि MSME फ्यूचर चैंपियन हबो आ SME पई 10,000 कोटी टंका गोटे बड़ व्यवराध जो देखा मिली आम MSME बाबद आलोचना करुँच ये अर्थनीति को गोटे बड़ बुस्ट दब एवं ये केते बड़ घोषणा हो पारे बजेट रे MSME क्षेत्र को लेकिन देखो आज्ञा मो मतरे जदि आमे टोटल GDP रो जदि 100% कंट्रीब्यूशन देखिबा ताले लगभग 60% हैला कंजम्पशन रु आसे माने कंट्रीब्यूशन टू द GDP 30% रे प्राय हमरो आसे इन्वेस्टमेंट रु आउ 10% रे गवर्नमेंट स्कीम माने आमे आज डेट रे जहां पर जुक्ति बा जहां पर हमर विभिन्न प्रकार दिग रखुचे तो सेटार जो गवर्नमेंट ऊपर फोकस करूचे जे विभिन्न दिग को से माने केमती बैलेंस करके नै कि आगु को जाई परिबे तो सेटा गवर्नमेंट रो इनिशिएटिव गोटे 10% जो धरिबे ताले 30% हला इन्वेस्टमेंट आउ 60% हला हमर हाउस होल्ड कंजम्पशन देखो ये जो 60% आउ 30% ये दीटा को जदि मिसेबे धरनियंतु 90% पाखापाखि डिपेंड करूची डायरेक्टली और इनडायरेक्टली MSME सेक्टर रो ग्रोथ उपरे MSME सेक्टर रो स्टेबिलिटी उपरे MSME सेक्टर रो सक्सेस उपरे केमिति धरनियंतु आमे ने हाउस होल्ड कंजम्पशन जदि 60% कंट्रीब्यूट करूची हमरो GDP की ताले जदि आमे सेटा को बढ़ाई पारुचे ता माने हमरो डिमांड बढ़िला
डिमांड जदि बढ़ुची ताकू ऑर्डर प्लेस करिया पई सेही बडा इंडस्ट्री दरकार एमएसएमई सेक्टर रे हो बा बड़ इंडस्ट्री हो जे कोन से इंडस्ट्री जो तो ता ऊपर आपन को डिपेंडेंट होबा पड़ियो एमएसएमई सेक्टर ऊपर एमएसएमई जदि एनकरेज करा गला ताले नॉट ओनली हमर हाउस होल्ड कंजम्पशन माने डोमेस्टिक कंजम्पशन केवल नुहे हमर इंपोर्टेड आइटम रो जो माने हम डिपेंडेंसी रखुचे सेटा भी धीरे धीरे कमी कमी जीवो ठीक अछि सुशांत मु आपण अंक कथा रो जा बुझी पारुची डायरेक्टली आ इनडायरेक्टली एटा लाभ दबा पई जाउची ठीक अछि त्रिनाथ बाबू ए कथाटी टिके हाइपोथेटिकल ही पारे किंतु मो मनरे ए प्रश्न सब बेले आसे जे आम भारत रे गाँ गाँ रे लोक मानका हाथ रे टंका नाय से माने गोटे रिस्क नबा पई कोनोसी प्रकार चिंता करि पारु नहंती से माने भाबुचंती जे केमती आमे जो नेता अच्छा नेता पछरे बुलबू 200 टंका पाइबू 500 टंका पाइबू 600 टंका पाइबू किंतु तांको पाखरे गोटे पोटेंशियल रही मु बुझा चेष्टा करी आपण जो बजेट शुणिले एते समय से आम देशर जो यूथ माने ग्रेजुएशन करी गाँव में बुलुचंती सेमानंकु रिस्क नबा पई इनिशिएटिव नबा पई किछि गोटे नुआ क्षेत्र प्रस्तुत करिवो कि एवं जदि करिवो तार सरलीकरण भाव में आपण टिके बुझेई दियंतो जदि गाँव में लोक माने आपण कथा शुणुथिबे ताले सेमाने आइडिया नेबे देखो आगे आपण गोटे भलो क्वेश्चन पचारले हमर दु दिन पर्यंत रूरल इकोनॉमिक हमें डेवलप न करिचे बा तार जदी ग्रोथ न बढ़िची ताले एई जो फैक्टर उडाका हमें डिस्कशन करचे तार भी किछि मूल्य रहबनी तो रूरल इकोनॉमिक टाको माने आपण ताको पैरेलली जदी अर्बन इकोनॉमी संगे असेंबल करिवे ताले सेठी जॉब क्रिएशन अपॉर्चुनिटी दरकार जा पई आपण कहि परिबे स्किल डेवलपमेंट सेक्टर किछि हो ता पई किछि कहि परिबे एग्रीकल्चर जदी कमर्शियल एग्रीकल्चर सेक्टर रे हो बा आपणकर इंफ्रास्ट्रक्चर बा एमएसएमई रो किछि ग्रोथ नेकी हो तो ए सब ये गुडा को प्रमोट करिया को पड़िबो जोटा कि गवर्नमेंट किछि किछि दिगरे कोन करे इन्वेस्टमेंट सब्सिडी जेमति गोटे आज निर्मला सीतारमण कहले 10,000 करोड़ रो गोटे एमएसएमई कॉर्पोरेट टाइप रो हो ता माने एटा आइदर इन्वेस्टमेंट सब्सिडी जो हो बा इंटरेस्ट सब्सिडी हो ए गुडा को सब प्रमोट बेसी जदी हमें रूरल सेक्टर को जाइकरी बा सेमी अर्बन सेक्टर को जाइकरी करै परिबा ताले आस्ते आस्ते सेटा चेंज हो त्रिनाथ बाबू आपनकर मतामत कोन या ऊपर नुआ जॉब क्रिएशन हो जा द्वारा कि सेमान भी पार्ट ऑफ हमर ठीक अछि ठीक देखंतु आपनकर जदी देखिबा एपटे यंगस्टर्स मानक पाई आमे जत्ते बळे मैन्युफैक्चरिंग कथा कहूचे पिला मानकर बा जो यंग जो माने पिला माने जो आपन जो कथा कहले नेता मानक पछरे बोली कि 200 टंका 300 टंका 500 टंका से जो मेंटालिटी को हम चेंज करिया पई पड़िबो कारण आपण देखिथिबे आमे भी देखुचे हम गां गहली रे भी देखुचे जेतेबेले पिला माने सेतेबेले बुलुचंती जेतेबेले नेडे गुडा कोहुनी की भोई जाउची सेतेबेले बाहरचंती जे आमे कोन पई आमे सरकार सेमती गोटे स्कोप करिचंती कि जे से माने रिस्क नहीं पारिबे लोन नहीं पारिबे डरिबे नि से माने कोनोसी काम करबा पई देखंतु एबड़ा बहुत स्कीम अच्छी भारत रे आम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी अच्छी तेणु ओनली आमे पिला मानकर माइंडसेट चेंज करिवार अच्छी जैसे काम करिबा जेपड़िया एभलिया नुहे जे आमे एपटे पाई गले टंकीकिया चावल पाई गले बा एसो पाई गले एसो चावल पाई के आमे एपटे काम करिबारे से भलिया मेंटालिटी पिलांकर चेंज होबा दरकार तांकर भविष्य तेणु सेथि पई आपण देखंतु एठी वर्तमान 10,000 टूरिज्म सेक्टर रे गाइड आपण देखंतु गाइड से माने क्रिएट करे पई 20 टूरिज्म स्पॉट रे चेष्टा कर माने एथरे प्रपोजल रखा है दैट आईएम थ्रू रे 12 वीक्स रो प्रोग्राम ये पाइबे तेणु सेथि पई आपण जे देखिबे जे हमर यंग आउ यूथ माने सब प्रकार आपणकर सपोर्ट रही किंतु पिला मानकु आमे चेष्टा करिबा तांको पाखरे पहुंचीबा ए जो नेता जो पॉलिटिशियन जो माने रहिचंदी से माने तांको आगु को नबा पई आमे चेष्टा करिबा दरकार से मानकु मोटिवेशन दवा दरकार कारण से माने होचन देशर भविष्य आपणकर एबे जे 29 इयर्स इंडिया रो एवरेज एज जोटा कि 39 होची आपणकर चाइना रो 41 हो 51 होची जापान रो तेणु से केस रे भारत रो जो यंग मास अछंती आबरे जोने काम करिवार जो अछि से माने होचन सबटो अधिका तेणु आमे से दिग को न जाई कि जो 2047 विकसित भारत कथा कोचे सेथि पई हमको सपोर्ट दबा दरकार एथिरे जहा बजट रे जहा प्रोविजन रहिछि खाली टूरिज्म नुहे मैन्युफैक्चरिंग कथा कह जाउछि एपटे आपणकर स्मॉल वेंडर्स आरंभ कर छोट छोट व्यवसाय करें तांको पाई भी आपणकर लोन रो व्यवस्था रखा जाइछि
तेणु ता सहित जदि आप देखिए जोटा आपणकर कार्बन कार्बन आउ कैप्चर जदि देखिए कार्बन कैप्चर जोटा कि आपण तो से सेक्टर भी आपणकर गोटे सेक्टर होची जोटे नेट जीरो कथा जॉब जहाँ कहा जाए कि जोठी कुशली अछंती तांको नियुक्ति केमिति मिलिबो से नै मध्ये एक व्यवस्था करा जाउछि सुत लेंका सबुले चाषी मान कथा गोटे आगे आलोचना करा जाए बजेट जिते आसे चाषी मान सरकार कौन चिंता करुछंती कारण एथर कैपिटल एक्सपेंडिचर कथा आम आलोचना करुछंती एमएसएमई सेक्टर कथा आलोचना करुछंती किंतु ग्रामीण विकास दिगरे चाषी मान गोटे बड़ भूमिका रही एथर बजेट रे चाषी मान कौन गुरुत्व दि जाइछि देखंतु सपोर्ट करा जाइछि एपटे हाई वैल्यू फार्म प्रोड्यूस पई ए बजेट रे सपोर्ट करा जाइछि हाई वैल्यू फार्म प्रोड्यूस करिया पई ता सहित जो जो क्षेत्र रे आमे एपटे प्रोडक्शन करूनथले ताकू आपण ध्यान दियाछि आमे खाली एमएसपी कथा कहले हबनी जोटा कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड टेक रिलेटेड हमको एग्रीकल्चर हो बा एग्रीटेक हो सेपटे आपनकर सपोर्ट सिस्टम पई सेपटे भी आपनकर देखा जाइछि आ फिशरीज पई जदि आपण एनिमल हजरी आपण फिशरीज कथा कहबा जो माने आमर इंडियन भेसेल्स रु जो तले माछ मारुचंती से माने जदि तांको पई भी सेपटे भी आपनकर टैक्स छूट रखा जाइछि तेणु आपण भावंतु खाली एग्रीकल्चर सहित ऑल द बेनिफिशियरी ऑल फार्मर्स ऑल कैटेगरी ऑफ फार्मर्स से माने सेथि भी आपण पाई परिबे पीनट्स आलमंड्स एपटे जो सब रही वालनट्स ये सब गुड़ा चाष करने तापाई भी आपण एपटे ध्यान दि जाइए से भी जमती एसगुड़ा हूँ कॉस्टली प्रोडक्शन तेणु से जे को एरिया रे हो पार को एरिया रे न हो पार ताकू देखिकी से भाया चाष करवा दरकार से आम जोड़ा आम इम्पोर्ट करुचे अदर कंट्री आम आलमंड्स इम्पोर्ट करुचे से जोगुड़ा आम बंद कर आम ये निजर प्रोडक्शन कर R&D रे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रे भी खर्च करा सुधांशु टिके रोकिबी मो आपण मानको आउ थरे आमे टिके जनता को सूचना भी दे दवा पई चाहिबी जे को प्रकार एथिरे फोकस करा जाइछि सरल रे कहबा पई गले जदि ओडिसा पई बड़ घोषणार ना कहबी ताले विरल खनिज कॉरिडोर नै बजेट रे घोषणा करा जाइछि अन्य पटे ओडिसा रे विरल खनिज कॉरिडोर हबो ए सूचना दिया जाइछि ओडिसा केरल आंध्र तमिलनाडु रे विरल खनिज कॉरिडोर हबो खनिज पदार्थ परिवहन पई जलपथ हबो अनुगुल तालचेर कलिंग नगर दे पारादीप को जलपथ हबो एई बाटरे अनुगुल पारादीप जीव खनिज पदार्थ एवं ओडिसा रे हेबो नेशनल सी कोस्टल वे अर्थात जातीय जलमार्ग हवा पई जाउछि ओडिसा रो नाम मध्य नैथिले निर्मला सीतारमन याकू ऐड मध्य करा जायतिला जदि हमें देखिबा उदित एमते अनेक गुडी सूचना दिया जायछि जेमति कि कंटेंट क्रिएटर्स मानक पई बड़ खबर कुआ जाय पारे जो माने कंटेंट तयारी करूछन्ते तांको पई बड़ सूचना दिया जायछि 15000 स्कूल 500 कॉलेज रे कंटेंट क्रिएटर लैब एवं गेमिंग रो 10 लाख नियुक्ति सुजोग जो यूथ मानकर कथा त्रिनाथ बाबू कहूथिले जो 29 एज रो कथा कहूथिले समस्त जेतेबेले कंटेंट क्रिएशन ने लागिछंती ताकू नै मध्य सरकार फोकस करिसंती उदित जाकि बहुत इंपोर्टेंट बोली कहा जाय पारे आ गोटे कथा जदि कहबा बजेट रे विरल मृत्तिका कॉरिडोर नै घोषणा करा जायछि ओडिसा रे एई विरल मृत्तिका कॉरिडोर करा जिवो ए प्रकार सूचना मध्य दिया जायछि यारी मध्य रे आ गोटे बड़ सूचना मध्य दिया जायछि एथिरे बजेट रे खेलो इंडिया मिशन घोषणा करा जायछि खेलो इंडिया मिशन रे नियुक्ति सृष्टि लक्ष्य रखा जायछि एवं प्रतिभा को चिन्हट करी परवर्ती दशंधि को जीवार लक्ष्य मध्य रखा जायछि त्रिनाथ बाबू मु बुझा पई चेष्टा करबी आपनकर ठारो जेतेबेले आमे बजेट को नेकरी आलोचना करूछु एवं निर्मला सीतारमन कर फोकस को देखिबा पई चेष्टा करूछु आपन को कोन लागिला जे एथरो कोन पई निर्मला सीतारमन 90 मिनिट रो भाषण रे इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द रो व्यवहार त करूथिले ड्यूटी शब्द को बारंबार व्यवहार करा जाउथला सेइतपय ट्विटर रे ट्रेंड करछि जे आज मैडम ड्यूटी मैम ही जाइछन्ते ए ड्यूटी को फोकस करबा और बारंबार ए ड्यूटी शब्द को व्यवहार करबा पछरे कोन कारण थाई पारे त्रिनाथ बाबू ओके सेथिरे जो ड्यूटी कथा कहितले बेसिक कस्टम ड्यूटी बीसीडी ऊपर जदि कहिबे सबुठू कारण आपणकर जो कस्टम ड्यूटी जो कम करा जाउची सेथिरे आपणकर मैडम सीतारमन बेसिक एग्जेम्पशन रखिछन्ती सोडियम एंटीमोनेट
कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग गुड्स आउ आपनकर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स 17टा कैंसर रिलेटेड ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी। तेणु आपण भावतु ड्यूटी जदि आमको कमिला जो रिड्यूस है तो अल्टीमेटली कौन है ना आमर एपटे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कथा कही पार बा एपटे आम जो इम्पोर्ट करुचे जो करुचे ताऊपर भी आम बेनिफिट आम पाइपे। तेणु से आम ये मैन्युफैक्चरिंग करने जो मैन्युफैक्चरिंग करने जो प्रोजेक्ट्स जोड़ा रोचे एक्सपांड करने कस्टम ड्यूटी बा आपको एपटे ड्यूटी आपको रिड्यूस करने पड़ो नचेत जितेबाला जदि कस्टम ड्यूटी जदि अधिका रहिबो देन अल्टीमेटली जो कंपनी मानक ऊपर बर्डन रहिबो सिथिपाई एथिरे ड्यूटी मैडम कथा कहते ड्यूटी ऊपर ही बेसी फोकस करा जायछि। एपे आउ गोटे आपण देखंतु आमे पूर्व कथा होतिले कथा हेइन अवश्य आमे देखुतिले डिस्कशन करले प्री बजट रे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऊपर आमे कथा होतिले सेतबळे देखुतिले ताको एआई रो डाटा सेंटर करिया पाए डाटा सेंटर जो जो कंपनी करिबो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेनर एठी जो करिवे जो से इंडियन कंपनीज को सप्लाई करुँच 2047 पर्यंत टैक्स छूट आपण भावतु जितेबाला भारत में डाटा सेंटर हवा निहाती दरकार कारण आमर देखो ये गोटे स्ट्राटेजी अलग अच्छी कारण जो बाहर कंट्री जो डाटा सेंटर रोचे डाटा चोरी हवा डाटा सब हवा दैट इज ए चांस। तेणु आमर जो ये आमर आम्पल ऑफ लैंड अच्छी कारण यही कथा भी मो प्री बजट रे भी केतरा चैनल रे डिस्कशन भी करी तेणु लैंड अच्छी आम्पल लैंड अच्छी एपटे इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप करें डाटा सेंटर करें अल्टीमेटली आम पर डाटा सिक्यूरीटी रहिबो। तेणु से 2047 पर्यंत आपन टैक्स छूट करा जायछि। तेणु एआई क्षेत्र मध्य गोटे विकास आड़क जीव कि एआई क्षेत्र में आम वैश्विक स्तर में जो कंपटीशन रे बर्तमान अच्छी ए बजेट पर ए कंपटीशन में आम केते आगुक रहिबा अर्थात ए बजेट रे सरकार जो दिग को लेकिन चिंता करुछंती एआई रो एमती विकास हम एमती हम ए दिगरे आम केते आगुक जाउछु बोली सुधांशु बाबू आपण भाबुछंती ए कंपटीशन रे आम भारतर स्थान एबे कोठी अच्छी आउ सरकार ये योजना पर ए लक्ष्य पर विजन पर आम केते बाट आगुक बढ़ी पारिबा एआई क्षेत्र में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज डेट रे बहुत गुरुत्वपूर्ण दिग निर्णय करिबो हमर जीडीपी हो हमर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो हमर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हो हमर पॉलिसी फ्रेम हो आपण जे कोनसी दिग को जदि आज डेट रे तर्जमा करिवे ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करिबा द्वारा बहुत जिनसर सहजीकरण बा सरलीकरण हे पारुची जदि गवर्नमेंट निर्दिष्ट भाव में एआई ऊपर गुरुत्व दौची रिगार्डिंग देयर पॉलिसी फ्रेमवर्क जे इंप्लीमेंट जेमती कहले दिना ताबू मोर जेमती जिनसटा को कहउतिले गोटे भल दिग को से ये कले जदि आमे से जिनस गुडा को नेकरी आमे हमर चाकरी बा विभिन्न प्रकार स्किल डेवलपमेंट बा तार नेकरी तार एमएसएमई सेक्टर रो इन्वॉल्वमेंट ए सब दिग को नेकरी आमे ताको जोड़ी परिबा ताले निश्चित रूपे एटा आगामी दिन रे हमर जीडीपी रो ग्रोथ हो गवर्नमेंट रो पॉलिसी फ्रेमवर्क हो गवर्नमेंट रो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हो एटा निश्चित रूपे हमको सहायता करिवो किंतु आज डेट रे आपण कहउछन जेमति पचाउछन मते जे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रे बजेट रो तार कोन दिग सेटा ए पर्यंत से क्लियरली कहि नांदी। हां निश्चित जे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गोटे आज डेट रे हम पई चैलेंज भी आ अपॉर्चुनिटी भी दीटा दिग हम पई अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करूची आ हम पाखरे चैलेंजेस भी अछि जे हमें ताको केमिति प्रॉपर वे रे ताको नेकी प्रेजेंट करि पाउजे ताको नेकी हमर विभिन्न दिग को हम जो जो जिनसडा चाहूचे सेटा को नेकी केमिति ताकर यूज करि पाउचे। निर्भरशीलता बहुत मात्रा कमी आम रप्तानी को अधिक कर आमदानी कमाउछंती एवं आत्मनिर्भरशील को अधिक जोर दि जाउछे सरकार रे। तेणु एबेका समय जेतेबेले विश्व में अनेक टैरिफ वार चली समय भारत आत्मनिर्भरशीलता आहरी बढ़िबो बोली कहा जाउछी तार प्रतिफलन कौन देखुछंती बजेट रे सुधांशु बाबू? देखो मु जमती जस्ट 5 मिनिट पूर्व आपन कहउतली जे जीडीपी रो इंडिकेटर हिसाब रे हम जदी हाउस होल्ड कंजम्पशन को 55 टू 60% नउचे जेमती हमर इन्वेस्टमेंट को लगभग 30% नउचे आ गवर्नमेंट रो जो इंप्लीमेंटेशन स्कीम टा 10% नउचे सेमती हमर केते इंपोर्ट होउची आ हम केते एक्सपोर्ट करूचे जेमती बाहर हम इंपोर्ट केते दिनस करूचे आ हम बाहर को किछि जिनस जदी पठौचे जदी तार भी गैप टाला ताले भी सेटा गोटे नेगेटिव फैक्टर रहे हमर जीडीपी ग्रोथ पाई। तेनु करी गवर्नमेंट सबु बेले चाहे जे आमे आत्मनिर्भरशील हेले बा आमे जदी निजर एटलीस्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन आमे एक्सपोर्ट तो पर करबा जेतला हमर निज कंजम्पशन ता फुलफिल हो तेनु करी आगो निज कंजम्पशन ता सरिला परे जदी आमे किछि एक्सपोर्ट भी करि पाउचे कोनसी से हमर मेडिसिन हो हमर बैटरी हो हमर मोबाइल हो बा हमर अदर इक्विपमेंट डिफेंस इक्विपमेंट हो एनी सेक्टर
जदि आमे हमर चाहिदा को पूर्ण करि साला परे आमे ताकू नै कि बाहर को भी रप्तानी कर पाछे ताले निश्चित सेटा गुटे पॉजिटिव तयारी करबा बाहर को भी पठै परिबा एमएसएमई सुदांश बाबू त्रिनाथ बाबू गुटे कथा को नै कि प्राय मासे 2 मास हला आलोचना चलছে त्रिनाथ बाबू एवं एई बजेट रो एई प्रकार आशा थिला जे बजेट रे आमे एम्ति किछि लोकन को दबा कि जे ट्रम्प को डर आ हमकु लागु नथिबो सेठी ट्रम्प गोटे डिसीजन नेले आमको हलचल हवा पड़ू नथिबो एवं बजेट रे सेमती किछि एलोकेशन करा हिछि कि बजेट रे ट्रम्प को चापुड़ा मारिबा भली एमती किछि कथा करा जाइछि कि जहाँ भारत को आगु को भी नउथबो आ ट्रम्प को ऊपर डिपेंडेंसी भी कमउथबो त्रिनाथ बाबू हाँ आपण ए जो कथा कहउचंती जे ट्रम्प को कथा ट्रम्प होचंती गोटे कौन कहवा आमे तांको को लैंग्वेज रे कहवा सेटा आमे एठी डिसाइड आमे डिस्कस भी करि परिबानी कारण सी तांकर जो धमकी वर्तमान जब देखिए तांकर धमकी प्रति कथा रे भारत को धमकी दिले कारण भारत रो बिजनेस सेठी बेसी अछि एटा होतला हमर समस्त भीतर थिला एक्सपोर्ट आपण टैरिफ बढ़े देबे अल्टीमेटली कोन आमेर प्रोडक्ट गुडा इनिशियल स्टेज रे से टैरिफ लगेले आमे आगु एक्सपेक्ट करने थिले अनएक्सपेक्टेड थिला वर्तमान देखंतु बजेट मु दुईटा जिनस आपन को लिंक करी ठीक तापरे आपण देखिथिबे साइलेंटली सरकार कोन कले साइलेंटली डिफरेंट जगह को आपनकर एक्सपांड कले तांकर एक्सपोर्ट बढ़ेले कारण आमे भारत रे मैन्युफैक्चरिंग करी कि बाहर कंट्री को आमे मैन्युफैक्चरिंग आम अदर कंट्री भी आमे एक्सप्लोर करिचे तापर अपन देखो यूरोपियन यूनियन सहित करेले तापर एपटे आमे एक्सप्लोर करिचे मिडिल ईस्ट सहित करिचे एपटे अदर कंट्री को आमे बाहर रशिया सहित करिचे ता पई आमे एपटे अमेरिका ऊपर बेसी आमे डिपेंडेंसी नुहे वर्तमान टाइम में कहबा आमे तांको डायरेक्टली अटैक करने डायरेक्टली अटैक करले से पागला लोक से भाई केतले पूर्ण कोन करो तण सेति पई ताको साइलेंटली ही इज मैनेजिंग माने गवर्नमेंट इज मैनेजिंग तण जा करछ करो वी आर एक्सेप्टिंग ठीक अछि जा दबो बट आमे साइड बाय साइड आमे अदर मार्केट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूचे एक्सप्लोर करछे ता से आपण देखंतु ए जो प्रायोरिटी आपण देखंतु आपण प्रथम रु देखंतु 6टा प्रायोरिटी सेक्टर प्रायोरिटी ऊपर कथा हे जे ए बजेट रे हां एथिरे अपना डेवलपमेंट ऑफ सिटी इकोनॉमिक रीजन ऊपर कथा कथा कहछ आपण भाबंतो सिटी वाइज इकोनॉमिक रीजन आमे क्रिएट करेबा जदी अल्टीमेटली देयर इज ए बजेटरी एलोकेशन अल्टीमेटली देयर इज ए एम्प्लॉयमेंट अल्टीमेटली देयर विल बी मैन्युफैक्चरिंग ता सहित पोजिशनिंग इंडिया एज ए ग्लोबल बायोफार्मा हब बायोफार्मा ऊपर जदि आपण देखिबे ता पाई भी एटा प्रायोरिटी करा जायछि दिया जायछि तापरे आपण आ गोटे सबटु बड़ कथा दिया आपण जदि देखिबे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र रे एक्सपेंशन करा जायछि कारण इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को जदि देखिबे ता पई बजेट आउटले भी रखा जायछि कारण आपण इलेक्ट्रॉनिक आइटम एठी आपणकर जदि अधिका होउछि जदि आपण अधिका हबो देन आपण 400 बिलियन रुपीज तेणु से आपणकर एठी सेटा को प्रायोरिटी दिया है अल्टीमेटली आमे इकोनॉमी को आमे जतले से कहउतले इट इज अ डेड इकोनॉमी बर्तन आमे देखले वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी पागल अर्ध पागल के पूरा पागल मु भी जानि ने किंतु जतले फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी को कहले जे डेड इकोनॉमी तांको इकोनॉमी को जगह रे जाउ तो ठीक अछि क्लीन एनर्जी को सर आउट के